करो रहे। ऑलराइट, हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके सामने हम फिर हाजिर हैं, टीम फाइलो सैपियंस। मेरे साथ आज माहदिन नहीं है पर ख्याली है, क्योंकि ये स्ट्रीम हिंदी और उर्दू में है। और चलिए, आप जितने भी, अगर अभी तक तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ है, पर जो भी ज्वाइन होगा तो मैं ये कहूँगा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेक श्योर करें कि ये जो सब्सक्रिप्शन नंबर है ये 1000 टच कर जाए, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 1000 से डबल हो जाए और बेहतर होगा। ख्याली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ऑडियंस को भी वेलकम, जो भी हमें सुन रहे हैं अभी या सुनेंगे। आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा आइडिया लोगों को हो गया होगा। तो एक वीडियो हम लोग देख रहे थे, आसिम इफ्तिखार जो एक मुफ्ती यासिर साहब के साथ टीम में उनकी शामिल हैं, तो उनका भी एक चैनल है जिसपे वो एक स्ट्रीम कर रहे थे। तो उसमें उनसे एनिमल सफरिंग और जानवरों के बारे में बेसिकली एक सवाल हुआ, तो वो हमें एक इंटरेस्टिंग सवाल लगा और उनका जो जवाब था, हमने सोचा कि उस पर हम अपना एक रिस्पॉन्स देते हैं। तो फाइलो, मेरे ख्याल में आप अगर कुछ ओपनिंग रिमार्क्स अगर आप देना चाहो, वरना फिर हम वीडियो में। हाँ, नहीं, मेरे ख्याल से वही है कि जैसा ख्याली ने कहा कि वो रिस्पांस में कुछ हमें आर्गुमेंट्स में परेशानियां लगी, तो हमने कहा कि चलो इसको एक थोड़ा, बहुत ही छोटी सी क्लिप है, ये स्क्रीन आपके सामने है। रैंडमली नाम से कोई कॉलर इनकी स्ट्रीम में गया था, और ये मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज की स्ट्रीम है, जिसपे आसिम भाई भी हैं, मुफ्ती साहब भी हैं, और बाकी और 2-3 पैनलिस्ट हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन है ये सुनते हैं, और ये किस ताल्लुक से है? ये है एनिमल सफरिंग के ताल्लुक से। आप सुनेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू है, क्या आर्गुमेंट है, क्या पॉइंट कॉलर ने रखे हैं, और रिस्पॉन्सेस अपने आसिम भाई के क्या रहे हैं। तो हम चेक करते हैं क्या है एग्जैक्टली, और फिर उस पर हमारे पॉइंट्स जो हैं, उसके हमारे एतराज़ात जो हैं, हम रखेंगे उस पर। चलिए, इस पे आगे बढ़ते हैं हम फिर। जी, रैंडमली साहब, प्रॉब्लम ऑफ ईवल पे आपका सवाल है, करें? अस्सलाम वालेकुम। पहले ये बता दें आप है क्या? वालेकुम सलाम। मुसलमान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, करें सवाल। जी हज़रत, सवाल ख्याली, यू कैन हियर इट राइट, द स्ट्रीम? आई मीन द मुझे वीडियो। आवाज आ रही है, मुझे आवाज अच्छा, बिल्कुल आवाज आ रही है ना? हाँ, ओके ओके, चलिए ठीक है। इसको फास्ट करूँ, 1.25 पे चला देता हूँ, मेरे ख्याल से शायद। छोटी वीडियो, बहुत छोटी वीडियो है, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत नहीं है, हाँ, बहुत छोटी वीडियो है। सवाल ये है, जैसे हमें सबको मतलब ये नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज, कॉमन नॉलेज है कि जो भी आदमी अच्छा बुरा करता है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुसलमान हो, तो उसका सबका उसको अजर मिलेगा, या तो दुनिया में या आखिरत में, किसी न किसी दर्जे में, किसी न किसी लिहाज से अल्लाह ताला उसको मतलब सबका हिसाब होगा। लेकिन जो जानवर होते हैं, मिसाल के तौर पे एक जानवर है, कुत्ता लेना, जो सड़कता रहता है उसका पैर टूट गया, वो पूरी जिंदगी पैर टूटे में ही रहा, और हमें ये भी मालूम है कि जानवरों को जो है ना जन्नत मिलेगी, मतलब कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें तो उनको तो मतलब मिट्टी बना दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता ये मुझे एक तरीके से इनजस्टिस लगती है जानवरों के साथ, तो इसको कैसे समझा जाए? उनको तो मतलब आखिरत में भी बदला नहीं मिलेगा उनको, जिंदगी तो उसकी मतलब, अगर हम जिसके एग्जाम्पल की बात करो, जिंदगी भी उसकी बेकार गुजर रही है, और आखिरत में तो उसका कुछ बदला है ही नहीं। चलें, ठीक है रैंडम साहब, आपका जो है वो आ गया सवाल। आपका सवाल बुनियादी तौर पे जो है वो इंसानों के मुतालिक नहीं है, जानवर के मुतालिक है, और मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज कर दूंगा कि मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज कर दूं तो मुमकिन है आपका क्वेश्चन और बेहतर हो जाए, कि आप उस सिनारियो को सिर्फ ले रहे होंगे जहाँ पे जानवरों का नुकसान जो है वो नेचुरल वजह से हुआ होगा, ठीक है, जहाँ इंसान इन्वॉल्व नहीं होगा या दूसरा जानवर इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है? जी हाँ, वो भी इंक्लूडेड है। नहीं, मतलब वो किसी उसको न किसी इंक्लूड करेंगे तो उसका तो मतलब ये हो जाएगा ना कि कह देंगे कि भाई इंसान को जो है, अगर इंसान ने किसी जानवर पे जुल्म किया है तो उसको उसकी सजा मिल जाएगी, उसको जस्टिस मिल जाएगी वहां आखिरत में जानवर को, ठीक है? इसी तरह किसी जानवर ने जो है किसी जानवर पे जुल्म किया है तो वहां उसको उसका बदला दिला दिया जाएगा, उसको वहां हो जाएगा, तो वो तो जस्टिस हो गई। मैं इसको इसलिए कहा कि मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइज कर देता हूँ जी बेहतर है। ताकि आप क्या
बेहतर बेहतर है ना। मैं और प्रिसाइज कर दिया हूँ कि जहाँ पे जानवर के जो सफरिंग है वो जो है सिर्फ और सिर्फ नेचुरल कॉज की वजह से हुआ हो, ठीक है जी। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें राइट्स का यहीं पर कॉन्सेप्ट फायदा समझना क्या होगा होगा, एक मिनट। कि हम इनजस्टिस उस वक्त कहते हैं जब किसी का राइट्स जो है वो अच्छा देखें, यहीं पर एक बात जो है वो हमें देखनी होगी कि जो ये आसिम भाई ने कहा कि हम इन्होंने सवाल को प्रिसाइज कर दिया, उसमें से कुछ केसेस को निकाल दिया। वो केसेस उन्होंने कहा कि एनिमल यानी ह्यूमन ऑन एनिमल सफरिंग, यानी वो ऐसी कोई तकलीफ, ऐसा कोई बुराई जो इंसान की वजह से किसी जानवर पर आए, या कोई ऐसी तकलीफ या दर्द जो किसी जानवर को कुछ दूसरे जानवर की वजह से हो। तो आसिम ने कहा कि हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं इस क्वेश्चन में से, और सिर्फ उस सिनारियो की बात करते हैं कि जिस सिनारियो में बिसाइड्स किसी इंसान या जानवर के अगर किसी और वजह से किसी जानवर को तकलीफ होती है, जैसे कोई पत्थर उसके ऊपर गिर जाता है, या वो किसी और नेचुरल कैलामिटी, कोई और जैसे हम कहते हैं कि नेचुरल इवेंट की वजह से उसको कोई तकलीफ होती है, वो डूब जाता है, या और किसी भी किस्म की कोई तकलीफ जो किसी अर्थक्वेक हो गया या कोई ऐसी अर्थक्वेक हो चीज गया, है, इस तरह अर्थक्वेक, की कोई सुनामी भी हो ऐसी गया, या है ना, सुनामी हो हाँ, गई, कोई बीमारी भी। हो उसको हो गई, कोई भी बीमारी हो गई, तो इस वजह से कोई भी अगर उसको तकलीफ होती है तो ऐसे केस को वो कह रहे हैं कि हम इंक्लूड करेंगे, और कोई भी तकलीफ जो किसी दूसरे इंसान या दूसरे जानवर की वजह से किसी जानवर को मिलती है तो उसको उन्होंने कहा कि हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अब पॉइंट ये कि ये इसको एक्सक्लूड उन्होंने जिस बेसिस पे किया, वो उन्होंने उसकी वजह बिल्कुल शॉर्ट सी बता दी, उसको भी मेरे ख्याल है हमें डिस्कस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो तो एग्जैक्टली होगा वो। ये कि अगर किसी इंसान ने जानवर को तकलीफ पहुंचाई होगी तो उस इंसान को सजा मिल जाएगी। अब या तो उन्होंने शॉर्ट होने की वजह से ऐसा कहा, या वो एक्चुअली यही पॉइंट आउट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, क्या अगर इंसान ने किसी जानवर को तकलीफ दी तो क्या उस इंसान को उस तकलीफ की सजा मिल जाना उस जानवर की तकलीफ का सिला है, क्या उसका बदला है, वो काफी है उसके लिए, जस्टिस है उसके साथ? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसको क्या आई मिला। एग्री। हाँ बिल्कुल ख्याली, आपकी बात से बिल्कुल 100% अग्री कर रहा हूँ मैं कि ये तो जस्टिस तो ये हो गया कि जिस बंदे ने गलत काम किया है, जिस इंसान ने गलत काम किया है, आपने उसको उसको सजा उसकी दे दी। कॉम्पनसेशन मिले। हाँ, पर उस जानवर के साथ क्या जस्टिस हुआ है या उसके साथ क्या अजर हुआ है? नहीं हुआ है, राइट। तो बिल्कुल ये तो गलत काम हो गया है। वो तो आपने बता दिया कि हाँ भाई, जिसने गलत काम किया, पर जिसके साथ गलत काम हुआ उसको क्या मिल रहा है, राइट। बिल्कुल यहाँ सबसे बड़ा ये सवाल उठता है। तो ये जो अपने आसिम भाई हैं, इन्होंने एक जो बहुत बड़ा और बहुत प्रॉब्लमेटिक केस है, उसको तो पहले ही दरकिनार कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल। तो तो वो ये है, खैर आगे हाँ आप ले बिल्कुल, लें। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर किसी इंसान ने जानवर पर जुल्म किया है, और उस जुल्म, जाहिर सी बात है, ये किसी जानवर को काट के खाने को वो उसको जुल्म समझते ही नहीं है, क्यों? हाँ, लेकिन अगर कोई उसको तकलीफ दे रहा है, कोई उसको बिला वजह जिसे कहते हैं टॉर्चर कर रहा है, किसी जानवर को पत्थर मार रहा है, इस तरह की कोई तकलीफ अगर कोई दे रहा हो किसी जानवर को, तो मेरे ख्याल है उस सिनारियो की ये बात अभी कर रहे होंगे, तो उस सिनारियो में वो ये कह रहे हैं कि उस जानवर को, उस इंसान को सजा मिल जाएगी। तो इंसान को सजा मिलना उस जानवर की तकलीफ का मदावा नहीं है, अगर मैं बिल्कुल सलीस उर्दू में बात करूं तो। लेकिन और अगर आसान उर्दू में कहूँ, हिंदी में कहूँ, तो किसी और की को, यानी जुल्म करने वाले को अगर उसकी सजा मिल भी जाए, तो जो मजलूम है, जिस पर जुल्म हुआ है, उसको उसकी तकलीफ उसका या उससे उसकी कॉम्पनसेशन नहीं होती, उससे उसका जस्टिस नहीं मिलता। हमारी दुनिया में कानून अलग है, यानी हमारी जो जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां पर हमें ये करना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि हम किसी परपेट्रेटर को, किसी क्रिमिनल को जब सजा देते हैं तो हम समझते हैं कि ये जस्टिस है, लेकिन ये ट्रू जस्टिस नहीं है। ट्रू माने में जस्टिस इसलिए नहीं होता क्योंकि हम ट्रू माने में जस्टिस किसी के साथ कर नहीं सकते। तो हम वही करते हैं जो हम कर सकते हैं, वो ये कि हम क्रिमिनल को सजा देते हैं। और उस पर भी आप देखेंगे तो अक्सर ये बात होती है कि जिसे हम कहते हैं ना बदला लेना, तो हम कहते हैं यार बदला लेने से तुम्हें क्या फायदा होगा, ये अक्सर बात आती है। तो उसका यही मतलब होता है कि हम कहते हैं यार अगर उस किसी ने तुम्हें तकलीफ दी थी और तुम उससे उस बदला ले भी लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा उससे? उसको तकलीफ तो तुम्हें हो गई, उसको तकलीफ हो जाएगी, तो तुम्हारा मसला कैसे हल होगा?
तो ये बिल्कुल एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका हल आसिम ने अभी इनके इस जवाब में बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो हमने बात कर ली कि अगर इंसान किसी जानवर पर कुछ बुरा करता है तो ऐसे केस में उस इंसान पर की सजा जो है, इंसान पर को अगर वो कोई सजा दी जाए तो वो काफी नहीं है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि अगर उस जानवर को भी कोई ऐसा, जैसे हम कहते हैं ना, कोई जन्नत नुमा चीज मिल जाएगी, कोई ऐसा कोई खाने को, अगर बकरी है तो कोई मजे की घास मिल जाएगी उसको खाने को, जन्नत नुमा कोई छोटी सी उसके लिए बन जाएगी, तो फिर हम उसका जो मैं ना उस इस पॉइंट को मैं अगले जो मैं पॉइंट है जो अगला जो पॉइंट आसिम ने उसको एक्सक्लूड किया, उसकी ज़िमन में या उसके पॉइंट के अंडर मैं डिस्कस करूंगा। वो पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि जो दूसरा इन्होंने सिनेरियो एक्सक्लूड किया है इस क्वेश्चन में से, वो है कि अगर कोई जानवर दूसरे जानवर पर जुल्म करता है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या सवाल ये उठता है, क्या कोई जानवर दूसरे, इस्लामिक थियोलॉजी में या रिलीजियस वर्ल्ड व्यू में, क्या कोई एक जानवर किसी दूसरे जानवर पे जुल्म कर सकता है? अगर वो जुल्म करता है तो सवाल ये है कि मुझे कोई, हम अगर, क्या ये कोई मिसाल दे सकते हैं कि एक जानवर दूसरे जानवर पर जुल्म कर रहा हो? मतलब क्या अगर कोई शेर कोई हिरन पे हमला करके उसको चीर फाड़ के खा जाता है, तो क्या ये उसने उस हिरन पे जुल्म किया है? मेरे ख्याल में ये इसको जुल्म इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये तो उस शेर की नेचुरल ग़िज़ा है, नेचुरल उसका जो फूड सोर्स है, वो ही जब कोई गोश्त है तो उसने किसी न किसी जानवर को तो काट के खाना है, ठीक है? तो अब ऐसी सूरत हाल में, ऐसे सिनेरियो में वो किसी एनिमल ऑन एनिमल ब्रूटैलिटी या वायलेंस किसे कह रहे हैं? क्या है वो सिनेरियो कि जिसमें कोई जानवर दूसरे जानवर पर जुल्म कर सकता है? पालो, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इस पे फर्दर डिटेल नहीं, मैं ख्याली बस इसमें यही ऐड करना चाह रहा, आपके ही पॉइंट को आगे ले जाते हुए, कि अगर जुर्म किसी मायने में लिया भी जा सकता है तो वो तब लिया जा सकता है कि आप कहो कि किसी तरह का टॉर्चर हो रहा हो। यहाँ तो वो एनिमल, हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि ब्रुटैलिटी है, कहीं आप कह सकते हो कि किसी अफ्रीकन मसाई मारा में या सेरेंगेटी में कोई एक ज़ीब्रा पे जब क्रोकोडाइल अटैक करता है, राइट? या इंडोनेशिया में कोई जो भी वो है कोमोडो ड्रैगन्स जो है, वो किसी भैंसे पे अटैक करती है, तो वो उसको खा के छोड़ देती है और वो फिर 15 दिन बाद धीरे-धीरे बैक्टीरिया से खत्म होता है। अब ये तो फिर जिसने नेचर बनाया है उसको आपको सवाल करना चाहिए। ये तो उसके वो तो अपना फूड सोर्स के लिए उसको ढूँढ रहा है, राइट? अब उसके पास जो लिमिटेड आपकी पावर्स दी हैं, जो भी जिसने भी दिया, आप कहते हैं कि ये जो पूरी कायनात का एक-एक मखलूक है, ये बनाया है खुदा ने बनाया है। तो अगर इस तरह की एबिलिटी उस कोमोडो ड्रैगन में दी है, तो ये भी तो उसी अल्लाह ने दी है, ठीक है? तो जो जो हो रहा है ग्राउंड पे, जो 15 दिन, 20 दिन के बाद जो भैंसा जो मरता है, बड़ी स्लो डेथ और पेनफुल डेथ जो मर रहा है, और अगर वहाँ पे कोई टॉर्चर है और पेन है, तो वो इंटेंशन जो है, वो कोमोडो ड्रैगन का तो इंटेंशन नहीं है, उसका इंटेंशन तो साफ है कि उसको फूड चाहिए। अगर वही ज़हर इंस्टेंटली काम कर जाएगा तो कोमोडो ड्रैगन उसको भी ले लेगा। पर अगर ये आपका मानना है कि ये जो इस नेचर को बनाया है किसी खुदा ने इसी तरह से, तो फिर तो आपको ये कहना पड़ेगा, फिर तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये जो जिसने भी इस कायनात की तख्लीक की है, या जो मखलूकों को बनाया है, वो ईविल है, राइट? उसने फिर इस तरह की चीज़ें डाली हैं जो आप कह सकते हो किसी अंडरस्टैंडिंग में, शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सब्जेक्टिव ह्यूमन्स की अंडरस्टैंडिंग में वो टॉर्चर हो, पर वो कोमोडो ड्रैगन के लिए वो टॉर्चर नहीं है, वो तो उसका फूड सोर्स है, सिंपल। और अगर आपको किसी को ब्लेम देना है अल्टीमेटली, तो फिर आपको ये ब्लेम देना पड़ेगा जिसने इस पूरी कायनात को इस तरह से बनाया है, बेसिकली। ये मेरा पॉइंट था इस पे। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हमने अब जो हम मिसाल डिस्कस कर रहे हैं, इस एग्जांपल में जब एक जिसे हम कहते हैं कार्निवोर गोश्तखोर जानवर जब किसी दूसरे जानवर पे हमला करके उसको खाता है, तो ये तो जुल्म, एटलीस्ट हम अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी उसको जुल्म इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये उसका प्राइमरी और नेसेसरी फूड सोर्स है, यानी उसको गोश्त खाना है।
जब उसने गोश्त खाना है, वो घास खा नहीं सकता, वो कोई पौधे खा नहीं सकता, तो फिर उसको अपने जिंदा रहने के लिए गोश्त खाना है। जब उसने गोश्त खाना है तो उसको किसी न किसी को या तो खुद मारना पड़ेगा या वो किसी और का इंतजार करेगा कि वो उसको मारे। तो या वो या जानवर के मरने का इंतजार करेगा और या फिर इतने स्कैवेंजर जानवर। हो वो, हाँ, या फिर लेकिन वो हाँ स्कैवेंजर हो। इतने ज़्यादा हम क्यों नहीं केसेस देखते, क्योंकि जानवर इतना, अगर उसको मारेंगे नहीं तो मरेगा नहीं। अक्सर अक्सर जानवर अक्सर जो शेर-नुमा जो गोश्तखोर जानवर हैं, वो इंतज़ार नहीं कर सकते। रोज़-रोज़ उनको मरा हुआ जानवर नहीं मिलेगा। तो बहरहाल, तो सब फिर वही पॉइंट आता है कि फिर इसका जो इल्ज़ाम हम देंगे, वो अगर हमने किसी को देना है तो वो इस निज़ाम के, इस सिस्टम के बनाने वाले को देंगे, कि क्यों उसने उनके एपेटाइट में या उनके लिए नेसेसरी जो फूड सोर्स रखा, वो गोश्त रखा। हो सकता था कि जिस तरह प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी से यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, वो उसी तरह से एक नॉन कॉन्शियस चीज को कंज्यूम करके, क्योंकि देखिए जो जो जिस्ट है ना, वो यहाँ पर आती है। जो बिल्कुल बुनियादी मुद्दा है ना, वो ये है कि क्या कोई भी एक ऐसी जो स्पीशीज है, कोई भी ऐसा वजूद कि जिसके अंदर शऊर है, जिसके अंदर तकलीफ और जो प्लेजर है, तकलीफ और खुशी को का एहसास उसके अंदर है, उसकी फीलिंग्स उसके अंदर मौजूद है। क्या ऐसी किसी चीज को उसको मारना, उसको खाना, उसको तकलीफ देना, ये क्या असल में ये यहाँ पर बात आती है। तो क्या ये ऐसा निजाम बनाना कि जिसकी बेसिस ही ये हो कि हाँ, एक जानवर जिसके अंदर खुद एहसासात मौजूद हैं, वो एक दूसरे जानवर को जिसके अंदर भी एहसासात मौजूद हैं, तकलीफ के और खौफ के और खुशी के, क्या ये सिस्टम बनाना कि जिसमें एक जानवर दूसरे जानवर को खा के दरअसल उसका सर्वाइवल की बुनियाद वो बनती है। तो क्या ऐसा सिस्टम बनाने वाला कोई मर्सीफुल गॉड हो सकता है? जस्ट तो मतलब इसको कह नहीं सकते बिल्कुल भी। तो उसके हम अगर इसको कहें कि मर्सीफुल होगा वो, तो ये इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ये एक बुनियादी सवाल यहाँ पर उठता है कि हम क्या इस किसी भी जानवर का दूसरे जानवर को काट के खाना, क्या इसको हम इसका ब्लेम हम उस जानवर को देंगे, खाने वाले को, या इस निज़ाम के बनाने वाले को देंगे, इस सिस्टम के बनाने वाले को, कि जिसने ये सिस्टम बनाया। तो फाइलो कुछ कहना चाह रहे थे? ख्याली बस एक चीज कहने वाला था। आपने मर्सीफुल का लफ्ज जो इस्तेमाल किया है ना, उसको जो खालिस अरबी में जो है वो रहम कहते हैं, अर्रहम अर्रहमीन, राइट। ये अल्लाह की तरफ ये पॉइंट किया गया है, राइट। अच्छा, अर्रहमान अर्रहीम अलग है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अर्रहम अर्रहमीन, ओके। राहिमीनों में से भी रहीम, ठीक है। राहिमुर राहिमीन कहते हैं मेरे ख्याल से, राइट। हाँ, रहमुर रहीमीन, राइट। रहम करने वालों इसका में से मतलब भी ये है कि रहम करने वालों में भी रहम करने वाला, बेसिकली, राइट। तो ये जो है, ये तो आप रहम करने वालों में भी सबसे जो ऊपरी दर्जा है, ये आपने किसी खालिक को दिया हुआ है, राइट। और अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करो, क्या आप ऐसे किसी खालिक से ये इस तरह का कोई निज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसा ख्याली ने कहा है? तो मैं ऑडियंस से यही कहूँगा कि अगर आप सुन रहे हैं, आप जो भी जिस भी खुदा को मानते हैं, आप ये एक बार सोच के देखिए, क्या इस तरह का निज़ाम कोई एक द मोस्ट मर्सीफुल बीइंग बना सकता है क्या, जिसको हम रहीमों में रहीम कह सकते हैं, बेसिकली, राइट। तो दोनों में डिफरेंस है। एक तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा पॉइंट डाइग्रेस हो जाएगा। रहमान और रहीम में जो फर्क है वो थोड़ा सा है, पर मेरे ख्याल से उसका डिफरेंस वो में बड़ा टेक्निकल है, वो उसको हमें वो हाँ बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, जाना उसमें हम घुसेंगे तो फिर कहीं और डिस्कशन निकल जाएगा। वो कभी हुआ तो बाद में उसको टच अपॉन इसलिए मैंने करेंगे। इंग्लिश का वर्ड मर्सीफुल यूज किया। तो राइट, बहरहाल राइट। ये तो अब ये सिनेरियो ये हमें आसिम देंगे या दूसरे मुसलमान या दूसरे बिलीवर्स देंगे कि जानवरों का एनिमल वायलेंस, या जिसे हम कहते हैं कि जानवरों का दूसरे जानवरों पे जुल्म, ये किस सिनेरियो में होता है। हम कह सकते हैं कि देखिए, अच्छा ये भी अजीब बात है कि हम जो है वो जो जितना हम देखते हैं जानवरों में हायर इंटेलिजेंस ना, उसमें हम जिसको हम से कहते हैं ना प्योर फॉर्म ऑफ वायलेंस, यानी हम जिसे बोले अननेसेसरी वायलेंस, वो हम
ऐसी स्पीशीज में ज़्यादा देखते हैं जो जिनमें हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस ज़्यादा है जनरली स्पीकिंग। आप देखें ऑर्काज और डॉल्फिन्स, चिंपैंजीज, तो ऐसे केस ऐसे जानवरों में इवन हम देखते हैं कि हमने ये भी यानी कि ये तक ऑब्जर्व किया गया है कि एक जानवर यानी डॉल्फिन वगैरह या डॉल्फिन में खासतौर पे देखा गया है कि वो बेबी सील्स के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, प्लेफुली उनको टॉर्चर करके फिर खत्म टॉर्चर करते हैं करते हैं, बेसिकली। बिल्कुल राइट बहुत राइट, ये नहीं ऑर्कास का भी ऑर्काज भी आपने सही एग्जांपल लिया है ख्याली। ऑर्कास का भी यही है, एंड ऑर्कास एक्चुअली टैक्टफुली जो है वो बहुत टैक्टफुली करते हैं, अपनी बहुत टैक्टफुली हंट करते हैं अपने प्रेज को। तो तो हाँ, मतलब आपकी बिल्कुल बात इसी तरह से चैंपैंजीज में किसी एक यानी बुलिंग का भी हम ऑब्जर्वेशंस की गई हैं, बुलिंग बिहेवियर जैसे हम कहते हैं, यानी जो चैंपैंजीज हैं उसमें कुछ ग्रुप होगा, वो एक किसी अपनी किसी एक चिंप को जो है वो बुली कर रहा है या अपनी डोमिनेंस को जिसे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक चिंपैंजी को मार रहा है या इस तरह का कुछ उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो ये हम केसेस देखते हैं जिनमें इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। उस तरह के जानवरों में हम इस तरह के केसेस देखते हैं कि जिनको हम कह सकते हैं जब सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे कि शायद ये जुल्म हो रहा है। लेकिन अगेन सवाल ये है कि यहाँ पर क्योंकि अब थोड़ा सा उसको डिफरेंट अब लेके जाएंगे कि क्या इसको आप जुल्म कहते हैं या ये भी उनके बिहेवियर का एक पार्ट है। क्योंकि फिर क्या क्या जानवरों में, क्योंकि अब जो बुनियादी सवाल आएगा वो ये आता है फिर, क्या जानवरों के अंदर सही और गलत की तमीज अल्लाह ने रखी है और क्या उनके अंदर भी फ्री विल मौजूद है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि एक जानवर किसी दूसरे जानवर को जुल्म कर सकता है तो इसका मतलब कि आप ये चीज मान रहे हो कि वो जानवर कोई ऐसा काम कर रहा है जो वो अपनी चॉइस के थ्रू उसने चूज किया है कि हाँ ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, मेरे पास फ्री विल है और मैं चूज कर रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ जो कि गलत है। तो क्या आप ये मानते हो फिर कि जानवरों में भी फ्री विल है? और अगर उनमें फ्री विल है तो फिर उनका और हमारा टेस्ट फर्क क्यों है? हमारे टेस्ट का जो नतीजा है, हमारे टेस्ट का रिजल्ट जो है वो इटरनल आफ्टर लाइफ है, यानी कि ना खत्म होने वाली जिंदगी में हमारा जो है वो या तो पैराडाइज में यानी जन्नत में या दोज़ख में हमारा जो है वो जैसे कहते हैं रिजल्ट आना है। लेकिन जानवर जो है उनके साथ ऐसा नहीं होगा। यानी वो अगर एक जानवर किसी अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए कोई जुल्म करता है तो उसकी सजा जो है वो कोई इटरनल पनिशमेंट क्यों नहीं मिलेगी या उसको इटरनल पैराडाइज क्यों नहीं मिलेगी? क्या ये जो म्यार है, जो स्टैंडर्ड अल्लाह ने जानवरों के लिए अलग रखा है और इंसानों के लिए अलग रखा है, तो इसकी फिर क्या बेसिस है? क्या ये अनफेयर नहीं है कि एक स्पीशीज को या अल्लाह ने इंसानों को बनाया उस पर एक डिफरेंट किस्म की रूलिंग लगाई और जानवरों को डिफरेंट किस्म की रूलिंग दी या डिफरेंट किस्म का स्टैंडर्ड अप्लाई किया उसके ऊपर? तो ये भी एक बड़ी इनकंसिस्टेंट अप्रोच लगती है मुझे कि अगर तो आप जानवरों में फ्री विल मानते हो तभी ये कह सकते हो कि कोई जानवर जुल्म कर सकता है, वरना आपके लिए ये बात बिल्कुल गलत है। यानी आपकी थियोलॉजी में फिर फिट नहीं बैठती। राइट। हेलो हाँ ख्याली जी इस जी पे बोलो। मैं ये कहूँगा कि ये जो इस हाइपोथेसिस को जो है अगर आप साइड बाय साइड रखेंगे, एक गॉड हाइपोथेसिस, ये जो पूरा निज़ाम आप सामने देख रहे हो इस तरह का, इसमें आप गॉड हाइपोथेसिस को सामने रखो और फिर एक ब्लाइंड एवोल्यूशन को सामने रखो। नॉट ब्लाइंड एवोल्यूशन बट आप समझ रहे हो, हाँ ब्लाइंड एवोल्यूशन ब्लाइंड ही है प्रीटी मच, राइट। तो आप इसको अगर सामने रखोगे तो बेसिकली आपको ये समझ में आएगा आप किस किस हाइपोथेसिस में इस तरह का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो प्रीडोमिनेटली आपका जवाब यही होना चाहिए कि ब्लाइंड एवोल्यूशन में ही आपको इस तरह का निज़ाम दिखाई देगा। अदरवाइज ये जो आप निज़ाम देख रहे हो कि आपके जो एनिमल्स हैं जिनको आप सोचते हो कि आपने उनके लिए कोई भी आखिरत में कुछ भी नहीं दिया है, तो जस्टिस नहीं है, ना ही उनको जन्नत नसीब होना है, ना उनको जहन्नम नसीब होना है। तो फिर इस तरह का निज़ाम किसने बनाया? इस तरह का निज़ाम ये जो बनाया है, उस निज़ाम को बनाने वाले खुद इंसान ही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को टॉप ऑफ द ट्री रखा है, उन्होंने अपने आप को सबसे पहले रखा है, राइट? तो यही सबसे बड़ी हाइपोथेसिस लगती है कि ये जो बनाया है इस तरह का सिस्टम, या इवन जो खुदा को बनाया है, वो खुदा को भी इंसान नहीं बनाया है, क्योंकि उस खुदा में उन्होंने अपने आप को पाया है, बेसिकली अपने लिए बेस्ट रखा है बेसिकली। बिल्कुल
राइट? नहीं, आप ये सही कह रहे हैं कि एवोल्यूशन के अंडर हम इस पूरे सिस्टम को जिस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो बड़ा इजी है, और वो हमें नजर आता है कि एवोल्यूशन थ्योरी के तहत ये यही हम इसी नतीजों पर पहुंचेंगे या ऐसे ही सिस्टम पर पहुंचेंगे। लेकिन अगर खुदा एक मर्सीफुल गॉड अगर एक सिस्टम बनाएगा तो उसके नतीजे में अब ये तो मुख्तलिफ एक्सक्यूजेस के साथ तो आप कहेंगे नहीं नहीं यही सिस्टम बनेगा, लेकिन अगर आप देखें तो इंसान को अगर मुझे एक पावर मिल जाए, मुझे अगर ऑल पावरफुल बना दिया जाए, अगर मेरे पास अनलिमिटेड पावर मुझे चाहे खुद ना अल्लाह ही दे दे किसी तरह, तो क्या मैं ऐसा सिस्टम बनाना चाहूंगा? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस सिस्टम के अंदर कितनी अननेसेसरी हमें पेन या सफरिंग इसमें मौजूद है। एक जानवर दूसरे जानवर को काट के खा रहा है, नेसेसरीली उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है जिंदा रहने के लिए उसके अलावा। तो ऐसी सूरत में हाल में हम जो है वो ये कहना कि ये सिस्टम किसी एक मर्सीफुल गॉड ने बनाया है, किसी एक ऑल गुड गॉड ने बनाया है, ये बड़ा एक मुश्किल, ये हाइपोथेसिस अनलाइकली है। हाँ, एवोल्यूशन के तहत जो सिस्टम है वो यही ऐसा ही सिस्टम शायद एक्सपेक्ट करते हैं हम, तो उसके अंडर ये ऐसा सिस्टम उसके नतीजे में यहाँ पर पहुंचना ये एक लाइकली हाइपोथेसिस। अच्छा, ये आपने राइट। जो खोली ये हदीस की, हाँ, क्योंकि ये मेरे पिछले पॉइंट से लिंक्ड है कि देखें ये इनकी थियोलॉजी में कैसे फिट होती है बात, ये खुद ही एक्सप्लेन करेंगे कि एक जो है वो सैलमेंडर जो कि एक लेजर्ड की किस्म होती है बेसिकली, वो हुजूर फरमाते हैं कि उन्होंने कहा कि salamander should be killed and said it blew on the fire on Ibrahim। बेसिकली ये कहानी हज़रत इब्राहिम के बारे में आता है कि हज़रत इब्राहिम को जब उनके ज़माने में लोगों ने आग में डालने की कोशिश की थी तो अब वो आग अल्लाह ने ठंडी कर दी थी। तो वो एक उस स्टोरी का एक पार्ट ये भी है कि एक सैलमेंडर, एक छिपकली जो थी, या जिसे छिपकली कहना चाहिए, कुछ और कहना चाहिए, लिजर्ड जो है उसने उस फायर पे वो ब्लो किया गिरगिट ताकि वो कहा जाता है उसको एक्चुअली। आई गेस। तो सैलमेंडर ने एक उस आग को भड़काने के लिए उस पे जिसे फूंक मारते हैं तो उससे फूंक मारी थी। तो ये कहते हैं कि जी आप इसलिए उसको मारें क्योंकि उसने इब्राहिम। अच्छा, अजीब सी बात है, ये हदीस में बहुत सी प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि क्या जानवर, क्या उसके पास फ्री विल थी कि उसने मारा, कि उसने उस तरह से किया, कोशिश की कि वो इब्राहिम को, वो भी उसका एक पार्ट थी उस ग्रुप का कि जो इब्राहिम को जलाना चाहते थे। दूसरी बात कि ये तो अगर है फ्री विल तब भी ये बात गलत है, क्योंकि क्या सारी सैलमेंडर्स ने जितनी दुनिया में आज मौजूद हैं, क्या इन सब ने उनके इब्राहिम की आग पर वो फूंक मारी थी? क्या आप ये कह रहे हो कि एक, जिसे हम कहते हैं फादर, एक बाप की जुर्म की सजा जो है वो बेटा देगा? ये तो इस्लाम के उसूल के खिलाफ है कि, और ये बाकायदा एक आयत है जिसमें है कि बाप की जो सजा है वो बेटे को नहीं और बेटे की सजा बाप को नहीं दी जाएगी। तो अगर ऐसा है तो फिर ये एक, जिसे कहते हैं एक सैलमेंडर के फोरफादर ने पता नहीं कितनी सदियों पहले एक गलती की थी, एक क्राइम किया था, एक सिन किया था, जिसे हम कहते हैं गुनाह किया था, उसकी सजा आज के दौर में हम आज के दौर के सैलमेंडर्स को देंगे, ये खुद ही इनके सिस्टम में नहीं बैठता। बहरहाल क्योंकि ये लिंक ये तो जो मैंने इनजस्टिस ऑफ द हाईएस्ट काइंड हो गया, मतलब बिल्कुल ही एग्जैक्टली इससे ज्यादा इंजस्टिस क्या हाँ, हो सकता है? तो बहरहाल ये बड़ी हाँ। प्रॉब्लमेटिक हदीस है। तो मैंने कहा ये और हमारे टॉपिक से रिलेटेड थी, तो मैं भी ये भी मैंने कहा दिखा दूं। तो चलो हम तो जो है आगे वो आगे आगे बढ़ें उस बढ़ते पे हैं, अपन वीडियो। आगे बढ़ते हैं। हम्म। हाँ नहीं, बहुत सारी परेशानियां हैं इसमें। अभी देखते हैं, हम अभी तो जस्टिस वाले पार्ट तक नहीं पहुंचे हैं। हम अभी देखते हैं कि आसिम भाई ना क्या कहना है इधर पे जस्टिस के। तो वायलेट होता है तभी कहते हैं इंजस्टिस। ठीक है रैंडम भाई, इंजस्टिस वही होता है ना जब हम किसी का राइट्स को वायलेट करते हैं, जी। है ना? ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि जो उस जानवर को तकलीफ पहुंची है नेचुरल फिनोमेना की वजह से, नेचुरल कॉज की वजह से, ठीक है, क्या वो उसके राइट्स का वायलेशन है या नहीं है? आप क्या समझते हैं रैंडम सर कि क्या वो उसके राइट्स का वायलेशन है या नहीं है? मुझे मतलब मैं समझ पा रहा हूँ ये आंसर कहाँ जा रहा है। मतलब एंड ऑफ द डे वही आएगा कि राइट सारे अल्लाह के दिए हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने उसको कर दिया, मतलब अल्लाह ताला की मर्जी से उसको हुआ। लेकिन ये सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं लगता मुझे। मैंने सुन रखा है आंसर
चलें मतलब ठीक है, कोई नहीं। तो पूरी आप चर्चा पहले से से ये तो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ना कि ये जो क्लेम है इनजस्टिस का, ये क्लेम एस्टैब्लिश हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने राइट्स दिए हैं, जिसको राइट्स दिए हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए सारे राइट्स हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अल्लाह ताला उसको कुछ गलत कर रहा है तो अल्लाह ताला को पूरा हक है, बिल्कुल ठीक, बात ठीक है। लेकिन मतलब एक बिल्कुल इसको मतलब एक मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करूँ। ये इनजस्टिस है या नहीं, मतलब एक मोटा-मोटा तौर पे देखें उसके साथ। वही तो रैंडमली साहब ने ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि ये इनजस्टिस है, ये एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा है कि ये इनजस्टिस है, चलिए ठीक है। क्योंकि मुझे इनजस्टिस कहने का कहते हैं ये है कि राइट्स के वायलेशन को। यहाँ पे राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है तो इनजस्टिस एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। जी, ठीक है। मुझे मतलब नहीं लगता है, वही आंसर है जो मैं सुन चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी थोड़ा मेरा नहीं तो आप रिसर्च उसको के हिसाब मतलब से उसको रद्द करें ना, कि उसको रद्द करें। आपके पास क्या दलील है इसको रद्द होने का? ये नहीं हजरत, इसका एस्टैब्लिश तो करें पहले कि वो उसके रद्द करने का यानी कि इनजस्टिस हुआ है उसके साथ। एक उसको जिंदगी मिली है ना हजरत, अल्लाह ठीक ताला है। ने उसको जिंदगी दी है। देखिए दो ठीक है। रेंडमली भाई, देखिए दो चीजें है। आर वी गोइंग विथ आवर इमोशंस, दैट इज डिफरेंट। आर वी गोइंग बाय द प्रिंसिपल्स और द रेशनैलिटी, दैट इज डिफरेंट। जब हम इल्म में आते हैं ना तो वहां जज्बात का काम नहीं होता। जज्बात को जो है वो परे रख के फिर इल्म की दुनिया में आया जाता है, फिर जो है वो डिस्कशन की दुनिया में आया। पहले पॉज कर दें। तकलीफ हो रही है, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं है अच्छा, थोड़ा सा ना अब आप इसको वापस करें। जब इन्होंने दोबारा से एक पॉइंट इन्होंने रेस किया है, इन्होंने एक आगे थोड़ा सा इसमें पीछे जाएं, इनका एक पॉइंट है, आप प्ले करें। है नहीं, मतलब एक मोटा-मोटा तौर पे देखें उसके साथ। वही तो रैंडमली साहब ने ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है कि ये इनजस्टिस है, और पीछे जाएं। ये एस्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा है कि ये एक्सप्लेन करूं कर दी। चलें ठीक है, कोई नहीं। तो आप पहले से ये तो एस्टैब्लिश कर जहाँ से आसिम ने बात शुरू की क्या भाई, तो उसमें क्या हुआ थोड़ा और प्रिसाइज कर दिया जाएगा उसको, वहां हो जाएगा। नहीं, वो तो जिसको ने जो है किसी जानवर पे जुल्म किया है तो वहां उसको सर इतना पीछे थोड़ा नहीं थोड़ा आगे इतना पीछे नहीं, ज्यादा पीछे लेगा। अभी जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया ना दोबारा इस पॉइंट से, उसमें थोड़ा सा जाए के लिए सबसे पहले हमें राइट्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि हम इनजस्टिस राइट्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, आई थिंक यही था। हाँ, चलाएं इसको। उस वक्त कहते हैं जब किसी का राइट्स जो है वो वायलेट होता है, तभी कहते हैं इनजस्टिस। ठीक है रैंडम भाई, इनजस्टिस वही होता है ना जब हम किसी का राइट्स को वायलेट करते हैं, है ना? ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि जो उस जानवर को तकलीफ पहुंची है नेचुरल फिनोमेना की वजह से, नेचुरल कॉज की वजह से, यहाँ पॉज करें। ठीक है, क्या वो उसके राइट्स का, ये जब ये जुमला इन्होंने बोला है ना कि ये जो जानवरों को तकलीफ पहुंची है नेचुरल कॉजेस से, तो जिस तरह आसिम ने भाई ने उनका सवाल प्रिसाइज किया था ना, तो मैं भी इनका जुमला प्रिसाइज कर देता हूँ। ये जो उन्होंने नेचुरल कॉजेस बोला है ना, तो मैं इसको प्रिसाइज कर देता हूँ। ये जो तकलीफ पहुंची है डायरेक्ट अल्लाह की वजह से, डायरेक्ट गॉड की वजह से, क्योंकि नेचुरल कॉजेस खुद तो कुछ नहीं करते, ठीक है। वो तो उसके पीछे तो जो है वो उनका जिसने ये पूरा सिस्टम बनाया, कंट्रोल तो कोई भी नहीं है ना, बकौल इनके ये सारा निज़ाम तो अल्लाह ने बनाया, ये गॉड ने बनाया। तो हम प्रिसाइज करते हैं जिस तरह से एक इंसान जब किसी एक दूसरे इंसान को लेट से कोई छुरी मार दे, तो हम ये नहीं कहते कि छुरी ने इंसान को मारा है, हम कहते हैं कोई इंसान ने इंसान को मारा है। तो इसी तरह से वो जब भी वो तकलीफ पहुंची है, वो नेचुरल कॉजेज आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जुमला प्रिसाइज ऐसे हम कर देते हैं इसको कि अल्लाह ने डायरेक्टली जो तकलीफ जानवर को पहुंचाई, तो उसका बदला कैसे मिलेगा, या वो किसी के क्या वो उस जानवर के राइट्स की जो है वो वायलेशन है कि नहीं। तो मैंने कहा ये पॉइंट हमें इसको जो है ना, इस पे इनको हमें भी कुछ प्रिसाइज करने चाहिए। इसको थोड़ा और जो फिलोसॉफिकली रिफाइंड टर्मिनोलॉजी में मैंने एक्चुअली इस तरह से सोचा था इसको, कि अल्लाह को तो पूरा नॉलेज है कि क्या होना है, कैसे होना है, राइट? ही इज ऑल नोइंग, राइट? और यहाँ पे कहीं पे भी नेचुरल कॉजेज में कोई फ्री विल आड़े नहीं आ रही है बेसिकली, ठीक है। बिल्कुल। तो जो भी नेचुरल कॉजेज जो पेन कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सफरिंग पैदा कर रहे हैं इन एनिमल्स के लिए, वो अल्लाह के नॉलेज में है और वो कुछ नहीं कर रहा है, राइट? और वो नहीं, और वो तो डायरेक्टली
इम्यूटेबल है, वो तो हम बिल्कुल हम वो गॉड को ही रिस्पॉन्सिबल है कहते हैं, बेसिकली, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके डायरेक्टली लिए, राइट? रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। डायरेक्टली यानी ये ऐसे है कि रिस्पॉन्सिबल है। ये ऐसे है कि अगर एक बंदा किसी की तरफ गन का पॉइंट करके अगर ट्रिगर दबाता है, तो बंदा बोले यार मैंने तो सिर्फ ट्रिगर दबाया है। अगर वो ये बात राइट, बोले और वो, तो ये हम ये नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे यार कि ट्रिगर दबा है, उसकी वजह से इस पिस्टल के अंदर जो है वो गोली कॉइल निकली है, जो है वो हाँ, रिलीज हुआ है और गोली निकली है और गोली वहां लगी है और आपको पता था कि यही होगा, इसलिए यही आप इसके होगा, लिए अकाउंटेबल हैं और आपके पास इसकी चॉइस भी राइट। थी कि आप ऐसा ना करो। इन सब तो फैक्टर्स की मौजूदगी में हम कहते हैं कि हाँ भाई आप ही ने इसको कत्ल किया है और आपकी वजह से उसको तकलीफ हुई है। तो यही हाँ, उसका बिल्कुल कत्ल इसी हुआ लॉजिक है। और जस्टिस ये है कि आपको जो है फिर आपको जो भी पेनल्टी है वो भुगतनी पड़ेगी। तो इस बिल्कुल केस में तो फिर या तो अल्लाह को भुगतना पड़ेगी कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये जो उसको प्रॉब्लम भुगतना है। क्रिएट की, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे जो इनका पॉइंट है, क्योंकि ये बेसिकली ये एक पॉइंट था कि जो मैंने कहा इस पे फर्दर क्लैरिटी हम भी थोड़ा सा इनके सवाल को इनके पॉइंट को प्रिसाइज करें। तो एक तो ये पॉइंट इनका हो गया। दूसरा जो इनका पॉइंट है बेसिकली वो ये कहते हैं कि राइट्स तो इस्टेब्लिश ही नहीं होते। राइट्स तो इस्टेब्लिश करने वाला जो एक हमारे पास सोर्स है, वो इनके इनके कॉल को सोर्स है ही गॉड। इसके अलावा किसी के राइट इस्टेब्लिश करने वाला कोई है ही नहीं। अब इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरा ख्याल है इसको ही डिस्कस करने में हमारा सारा टाइम लगेगा, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम है वो इसी के अराउंड होती है। आप कहते हैं कि जी राइट्स का जो राइट्स डिसाइड करने वाला जो एंटिटी, राइट डिसाइड करने वाली एंटिटी वो सिर्फ गॉड है। वो ही डिसाइड करेगी कि इस स्पीशीज के, इस शख्स के क्या राइट्स हैं, और वो राइट्स अगर वायलेट होंगे तो आप उसको कहेंगे ये इनजस्टिस है, और अगर वो राइट्स वायलेट नहीं हो रहे तो आप कहेंगे ये जस्ट। अब इसमें सबसे पहले हम ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि जब आप ये कहते हो कि अल्लाह ने राइट्स डिसाइड करने हैं, तो सवाल ये है कि वो राइट्स किस बेसिस पर डिसाइड करता है किसी के। अगर वो कहता है जानवरों के राइट्स में ये शामिल नहीं है कि उन जानवरों को जिंदा रहने का इस तरह हक नहीं है जिस तरह इंसानों को है, यानी कि जिस तरह जानवरों को हम काट के खा सकते हैं, तो ये उनकी राइट नहीं है कि वो, एक बकरी का राइट नहीं है कि यार वो जिंदा रहे, अगर एक इंसान उसको काट के खाना चाहता है तो ये राइट अल्लाह ने इंसान जानवर को नहीं दिया, लेकिन ये राइट इंसान के पास है कि वो जिंदा रहे। तो ये जो राइट है ये अल्लाह ने किस बेसिस पर किसी भी स्पीशीज को, किसी भी रेस को, किसी भी अपनी क्रिएशन को दिए हैं? क्या ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी है कि इंसान तो बड़ा स्पेशल अल्लाह ने उसको करार दे दिया है बिल्कुल आर्बिट्रेरी बेसिस पर, या इसकी कोई पीछे रैशनल है? क्या कोई इनेट, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ है, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है जिसको अल्लाह फॉलो कर रहा है, कि जिसकी बेसिस पर हम कह, जब उसने उसने हमें बताया कि जानवरों के ये राइट्स नहीं हैं जो इंसानों के हैं, और कुछ राइट्स हैं जानवरों के पास कि बस बिला वजह तकलीफ ना दो, काट के खाना चाहो खा लो, लेकिन ये चीज़ इंसानों पर अप्लाई नहीं होती। इंसान को ना तकलीफ देनी है और ना उसको काट के खाना है, यानी एक इंसान दूसरे को खा नहीं सकता। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये राइट्स खुदा डिसाइड कैसे करता है? अगर तो ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी हैं, तो फिर आपने पूरे सिस्टम को, यानी फिर आप ट्रूली ये मान रहे हो कि ये सब कुछ आर्बिट्रेरी बेसिस पर है। सारे जो हमें राइट्स मिलते हैं, इवन इंसान को जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ रिलीजन ने, वो भी सिर्फ एक आर्बिट्रेरी डिसीजन था अल्लाह का कि भाई ठीक है यार, ओके मैं इसके वजह इसको स्पेशल कर देता हूँ। तो इस आर्बिट्रेरी डिसीजन की बेसिस पर हम किसी को कोई एक्चुअल ट्रू ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस नहीं मिल जाती। हम सिर्फ ये कहेंगे कि ठीक है भाई, जहाँ हो सकता था कि अल्लाह जानवरों को स्पेशल कर देता, उसने कहा नहीं चलो, जिसे कहते हैं ना डाइस, ही प्लेड डाइस, उसने एक तो बाय रैंडम चॉइस, बाय रोल ऑफ डाइस रोल बेसिकली। ऑफ डाइस, बाय रोल ऑफ डाइस अल्लाह ने कहा ओके यार इसकी लॉटरी निकल आई है, इंसानों की, इसको मैंने स्पेशल करार दे दिया, जानवर इतने स्पेशल नहीं। तो अगर तो ये आपके सिस्टम की बुनियाद है। और क्या इस सिस्टम को आप, एक आर्बिट्रेरी सिस्टम को आप इनेट, आप कह भी सकते हो कि ये कोई जस्ट सिस्टम? तो एक तो राइट। ये सबसे बुनियादी सवाल होता है। आप इस पर अगर कुछ कमेंट ख्याल करना चाहो या अपना कोई पॉइंट देना चाहो। ख्याली इसमें जो है ना प्रॉब्लम्स अगर घुसेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा डीप चले जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत अंदर है, जाया जा बहुत है। सकता है। अच्छा, एक मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाती है एपिस्टेमोलॉजी की, कि हाउ डू यू नो कि ये जो गॉड जो है वो वही चाहता है जो आप कह रहे हो वो चाहता है, ठीक है?
और आप में मतलब हम इंसानों की बात कर रहा हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो खुदा आप जो सोच रहे हो कि ये खुदा हमें कह रहा है, इसकी आप एपिस्टेमोलॉजी कैसे कह सकते हो कि वो जो कह रहा है वो सही ही कह रहा है? हो सकता है वो झूठ कह रहा हो सकता है वो अ, आप फ़र्ज़ कर लो कि आप यहाँ तक भी पहुँच गए कि वो उसी ने बात की है ये सारी, वही हमें गाइड कर रहा है ये सारी मैं सॉरी जो भी फाइलो, एक चीज जस्टिस आपको वाली। यहाँ एक चीज इसलिए रोक लूं कि क्योंकि हम अगर इस पॉइंट से बात करेंगे तो वो रेलेवेंट होगा एक दूसरे सवाल पर कि हम जानवरों के साथ क्या करते हैं। हम जब यहाँ पर जो सवाल है वो उससे रिलेटेड है कि क्या कोई नेचुरल कॉज से जब किसी जानवर को तकलीफ होती है, कोई डिजीज से, कोई अर्थक्वेक से, तो क्या वो उसके ऊपर जुल्म है या उसको तकलीफ है तो वो क्यों उसको पहुंचती है। तो आई थिंक वहां पर ये हमारे लिए ये समझना जरूरी नहीं है कि क्या सही है क्या, वैसे ये सब कहते हैं ना कि क्या उसने हमें राइट, बताया राइट, है वो पॉइंट वो डाइग्रेस हो डिफरेंट बात जाएगा होता है। एक्चुअली, राइट, हाँ, तो पॉइंट हमारे डाइग्रेस पास हो जाएगा, ऑलरेडी तो हम वापस इस खींच के आते हैं स्पेसिफिक इसमें। सवाल, हाँ, इस स्पेसिफिक सवाल हुँ, को एड्रेस करने के लिए हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं कि उन पॉइंट्स को तो हुँ, हम छोड़ दें कि जो जरा हमारे जगह ना फार फेच्ड है। तो आप राइट, राइट। इस पे हम नहीं जाते अभी। हाँ, उस पे हम नहीं जाते हैं बेसिकली। चलिए, मैं इतना ही कहूँगा इस पे फाइनली अभी आपको हैंडओवर करने के पहले, ये कहूँगा कि ये जो राइट टू लाइफ़ ये किसने डिसाइड किया है? जैसे कि आप कह लें कि एक अगर खुदा है, उसने किसी मखलूक को अगर लाइफ़ दी है, तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर वो मखलूक कहे कि नहीं मैंने इसको राइट टू लाइफ़ भी नहीं दिया है, मैंने इसको लाइफ़ दी है बट मैंने उसको राइट टू लाइफ़ नहीं दिया है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ कि उसको पैदा तो किया, पर अब उसकी जान जो है वो नेचर के हाथ में है या दूसरे जो इंसानों के हाथ में है, पर उसका खुद का कोई राइट नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हाँ, उसको अगर जान देके या जानदार जो भी है, उसको जान देके उसको राइट दिया है, राइट टू लाइफ़, तो फिर ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, उसके हिसाब से जो है उसका राइट जो है वो इन अ सेंस वायलेट हो रहा है। पर हाँ, आप कह सकते हो कि हाँ ये खुदा उसी तरह से चाहता है, उसने इस तरह से निज़ाम इस तरह से बनाया है कि वो जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, वो उसकी लाइफ़ ले रही हैं। पर क्या वो सफ़र कर रहा है? सवाल ये उठता है कि चलो जान तो ली, पर क्या वो सफ़र कर रहा है उस नेचुरल कैलामिटीज़ की वज़ह से? सवाल इस पे होना चाहिए। और उसका मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगा, शायद हम बहुत दूर नहीं जाएँगे। जो ग्रेट माइग्रेशन जो होता है, विल्डेबीस्ट का जो होता है और जिसके साथ में ज़ीब्रास भी जाते हैं सेरेंगेटीज़ से जो मसाई मारा का जो पूरा पैच है, जो मसाई मारा नेशनल पार्क और मारा रिवर के आस-पास का, वहाँ पे ये जो विल्डेबीस्ट हैं, ये रिवर क्रॉस करने के लिए ना केवल न केवल ये क्रोकोडाइल्स का शिकार होते हैं, बल्कि ये स्टैम्पीड्स पे भी मारे जाते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर ये निज़ाम है जिसमें ये अननेसेसरी या जिसको कह सकते हैं ग्रेचुइटस ईविल जो है, ये फेस कर रहे हैं, ये ग्रेचुइटस सफरिंग जो है ये एनिमल्स फेस कर रहे हैं। तो फिर आपको ये कहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं ये इनजस्टिस हो रहा है बेसिकली। पर हाँ, आप ये है कि आपने डेफ़िनेशन ही बदल दी है इनजस्टिस की, आपको कहना है कि जस्टिस और इनजस्टिस वही है, जो खुदा तय करेगा। तो फिर तो आपको ये कहना पड़े कि ये सफ़रिंग नहीं है। फिर आप अगर इस तरह से इस रूट पे अगर आप जाते हैं, तो फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आप किसी तरह से किसी और मख़लूक की सफ़रिंग को आप एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते, चाहे वो अ, 2 महीने की बेबी क्यों ना हो, बच्ची क्यों ना हो, उस पे भी आप नहीं कह सकते कि हम कैसे जानते हैं कि वो सफ़र कर रही है या नहीं कर रही है। राइट? बिल्कुल। ख्याली। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और आपने यही बेसिकली ये जो सवाल की बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट एंगल है ना, वो ये है कि क्योंकि इसमें अब फिर हम सिर्फ नेचुरल कॉजेज़ और नेचुरल सोर्सेज़ ऑफ सफरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि जो तकलीफ जानवर को हो रही है, ये उस तकलीफ का क्या फ़ायदा है? यानी कि वो तकलीफ अल्लाह उसको दे क्यों रहा है? यानी इंसानों में तकलीफ की एक वजह इन्होंने बना दी है, एक तौजी, एक जैसे कि एक्सक्यूज़ निकाल लिया है, वो कहते हैं ये दुनिया तो टेस्ट है। तो जो भी तकलीफ है वो भी इम्तिहान है और उस इम्तिहान के बदले में जब अगर हमने ये टेस्ट पास कर लिया तो हमें जन्नत मिल जाएगी, फेल कर लिया तो हमें तो मिल जाएगी। और फिर बाद में अगर किसी ने जन्नत मिल गई तो फिर तकलीफ का कॉन्सेप्ट ही खत्म। ठीक है? यही इनकी बेसिकली अब थियोलॉजी है। जानवरों को तकलीफ देने की वजह है, खासतौर पे नेचुरल सोर्सेज से है क्या? क्या उनका भी टेस्ट चल रहा है? और अगर उनका टेस्ट चल रहा है, तो फिर
तो फिर तो बात ये है कि फिर उनका भी फिर हशर जिसे हम कहते हैं वो हमारे जैसा ही होना चाहिए। उनका हशर फर्क क्यों है? अगर आप बोलते हैं बस ये अल्लाह ही डिसाइड करेगा कि किसने किस बेसिस पर जिसे कहते हैं कि किसका किस तरह का हशर, किस तरह की आफ्टर लाइफ होनी चाहिए, किस तरह का टेस्ट होना चाहिए, तो फिर ये सवाल ये उठता है कि अब हम सवाल करते हैं कि फिर ये आप लोग ये जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, ये वर्ड्स ना इस्तेमाल कीजिएगा। कौन से? कि या आप ये जो दावा करते हैं ना कि गॉड जस्ट है, और फिर जस्ट से बढ़ के आप कहते हैं गॉड ऑल गुड है, गॉड मर्सीफुल है, ये फिर इन दावों की कोई बेसिस नहीं है ना। फिर आप फिर एक बात कर रहे हैं, सिर्फ आपने दावा ठोक दिया है कि वो जस्ट है। भाई मुझे बताएं जस्टिस का फिर मतलब क्या है? आपने कहा कि जस्टिस का मतलब है कि जो उसके राइट हैं वो उसको दे दिए जाए। अच्छा, तो किसी का राइट है क्या, ये कैसे डिसाइड होगा? ये खुद अल्लाह डिसाइड कर रहा है। तो अच्छा, अब जब हम बात ही इसकी अगर हम इस अब सवाल उठे कि क्या अल्लाह जस्ट है, तो फिर ये पॉइंट उठते सवाल ये उठेगा कि इसका मतलब अगर, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा, एंड जुल्म इज दी जुल्म जस्टिस का ऑपोजिट है। तो अगर अल्लाह ख्याली एक मिनट एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। हम जब भी जस्टिस की या किसी भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल करेंगे, हम हमेशा अपने पर्सपेक्टिव से ही देखेंगे, राइट? हम जस्टिस कैसे देखेंगे, हमें कैसे समझ में आएगा जस्टिस क्या है? हम किसी वो के तो सही ऊपर है। जुल्म होते हुए हाँ, देखेंगे, राइट? मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारी जो कहीं ना कहीं इसमें हमारा एक सब्जेक्टिव ओपिनियन आ ही जाएगा, चाहे हम बिल्कुल उसको अल्लाह की तरफ पॉइंट कर दें या किसी और हायर बीइंग की ओर पॉइंट कर दें। मेरा बस यही पॉइंट है कि ये नहीं, हमारी समझ जो है वो बहुत लिमिटेड ही रहेगी इस केस में, जितनी भी हो, राइट? चाहे बिल्कुल आप वो किसी नहीं, भी इसकी तरफ पॉइंट कर दो। बिल्कुल आपको पॉइंट सही है। जो जो मैं सवाल उठाना चाह रहा हूँ ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये कि जब अगर आप कहते हो कि जस्टिस के जो स्टैंडर्ड है, यानी कि किसका क्या राइट है और क्या नहीं है, अगर ये खुद अल्लाह ने ही तय करना है, तो फिर लेट से मैं कहता हूँ कि अगर आप और आपने दावा कर दिया कि अल्लाह जस्ट भी है, और ना सिर्फ अल्लाह जस्ट है बल्कि अल्लाह मर्सीफुल भी है, तो अब आपकी अप्रोच पे चलते हैं और देखते हैं कि आप सवाल मतलब हम ये देखते हैं कि क्या होता, तो आप कहते हैं कि हाँ यार, अगर ये होता ना तो हम कहते हैं गॉड जस्ट नहीं है, और ये होता तो हम कहते हैं कि गॉड मर्सीफुल नहीं है। ऐसे एग्जैक्टली क्या सिनारियो होगा जिसमें आप कहेंगे कि हाँ यार, अगर ऐसा होता ना तो हम कहते हैं गॉड जस्ट नहीं है, और ऐसा होता तो गॉड मर्सीफुल। यानी अगर मैं कहूँ कि गॉड ये ऐसा करता कि किसी इंसान का भी कोई राइट नहीं है, हर इंसान दूसरे को खा पी सकता है, वो कैनिबलिज्म भी ठीक है, कोई बच्चे को भी मार सकता है, अगर अल्लाह ये राइट्स ही ना देता इंसान को, जो आपने कहा कि अल्लाह ने ही राइट दिए, तो ये अल्लाह अगर इस ख्याली तरह के मेरे राइट्स इंसान को ना देता। हाँ सॉरी ख्याली, मैं ये कह रहा हूँ ये अनफॉल्सिफाइबल क्लेम सा है ऑलमोस्ट हाँ, बेसिकली, क्योंकि और इसमें आप जो भी जुमला ऐड करोगे वो खुदा ने चाहा तो ऐसा हो गया, खुदा ने जस्टिस को नहीं, ऐसा और कहा। ये सिर्फ अनफॉल्सिफाइबल का मसला नहीं है, ये एक इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल फिर सिर्फ धोखेबाजी के अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। यानी ये कहना कि गॉड जस्ट है या गॉड मर्सीफुल है, अगर गॉड ने खुद ही डिसाइड करना है, उसका खुद साख्ता मेयार है, उसका सेल्फ मेड ही मेयार है, और वो मेयार कहता है कि यार वो मेयार में फॉलो, यानी कि फिर आप ये कहते हो कि जब जब गॉड सवाल, बेसिक क्वेश्चन ये है, आप गॉड को जस्ट क्यों कहते हो? फिर बस ये बता दो, समझा दो। जस्ट जब आप गॉड को कहते हो इसका मतलब क्या है? जब आप ये कहते हो कि गॉड जुल्म नहीं करता या नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है? कि क्या क्या इसका ये मतलब है कि उसने स्टैंडर्ड बड़ा जस्ट बनाया है या बड़ा फेयर सिस्टम बनाया है? तो इसका तो फिर आपके पास कोई मयार ही नहीं है, इसको किसी उसके सिस्टम को इवैल्यूएट करने का तो कोई मयार ही नहीं है ना आपके पास, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है जिस पे आप उसके स्टैंडर्ड को जज कर सको। वो तो तो उसी इसका का मतलब, स्टैंडर्ड है, आप उसी उसका के स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से उसी को जज कर रहे हो बेसिकली, तो इसका उस मतलब खुदा के इसका स्टैंडर्ड से उस खुदा को जज कर रहे हैं। एग्जैक्ट इसका मतलब कि अगर गॉड जो मोस्ट इविल कंसेप्शन ऑफ गॉड होगी ना, आपकी अप्रोच के तहत आप उसको भी कहोगे कि ही इज द मोस्ट मर्सीफुल एंड मोस्ट जस्ट गॉड। जस्ट बेसिकली राइट क्योंकि आप राइट कहोगे राइट, कि यार बिकॉज वो देखो ना भाई, आर्बिट्ररी हो गया है ऑलमोस्ट। क्योंकि वो तो राइट्स उसी ने असाइन करने हैं ना। तो वो कह देगा कि अगर वो गॉड कहता कि यार किसी इंसान का कोई राइट नहीं है, और मैं बल्कि इंसान का ये राइट भी नहीं है कि मैं यानी एज अ गॉड मैं उससे सच भी बोलूं, तो जो कुछ मैंने तुम्हें बोला भी था ना वो सब झूठ था। मैं तुम लोगों का कोई राइट है कि मैं तुम लोगों से सच बोलूं? ये तो मैंने डिसाइड करना राइट था ना राइट कि तुम्हारा ये राइट है कि तुमसे सच बोला जाए, तो तुम्हारा ये राइट नहीं था, मैंने तुमसे झूठ बोला।
तुम्हें बेवकूफ बनाया, जाओ अब जहन्नुम में जाके सड़ो। जितने भी तुमने नेक भी, जितने लोग बेचारे नेक भी इस दुनिया में काम करते रहे, वो भी बेचारे में कहेंगे है अल्लाह ये आपने क्या कर दिया, वो आप तो बड़े जस्ट और फेयर थे। तो वो यही आपसे बात, वो आपको यही बोलेगा कि यार जस्ट, मैं तो बिल्कुल जस्ट हूँ। तो इंसान बोलेंगे कि यार वो कैसे आप जस्ट हो। तो आप वो बोलेगा कि यार देखो राइट तो मैंने असाइन करने थे लोग, तो मैंने तुम लोगों को ये राइट ही दिया था कि मैं तुमसे सच बोलूं, ये तुम्हारे साथ फेयर हूँ। तो मैं बिल्कुल जस्ट हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें राइट्स ये दिए ही नहीं थे, तुमसे झूठ बोला था मैं। तो तुमसे झूठ बोल दिया, इसमें भी कोई अनफेयर बात नहीं है। तुम्हारा ये राइट ही नहीं था कि तुमसे सच बोला जाए, तुम्हें सच हकीकत बताई जाए, तुमसे बिल्कुल ट्रू ट्रू सिनारियो तुम्हें बताया जाए। तुम तो किस इसका बेसिस मतलब पे जस्टिस डिमांड कर सकते हो मेरे से? हाँ, तो तुम्हारे मैं पास जस्ट कोई हूँ, बेसिस नहीं। मैं जस्ट हूँ, यानी मैं खुद जस्ट, जो मैंने किया है वो जस्टिस है बेसिकली। जो मैंने किया है वो जस्टिस है। तो ये ये बहुत ही बेसिक मतलब बहुत ही बेसिक, कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो में घुस जाएंगे अपन इसमें। ख्याली मेरे नॉट ख्याल से कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं, इससे, अनसॉल्वेबल। इट्स नॉट हाँ नहीं, कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम। कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो मतलब जिससे आप बाहर नहीं आ सकते। ये इट्स अ बिल्कुल, कॉनंड्रम इससे आप बेसिकली। बाहर नहीं इट्स निकल सकते। भूल भुलैया है आपको जिससे आप बाहर आ ही नहीं सकते ये आपको इसमें। मानना पड़ेगा कि ये सेल्फ डिफीटिंग, ये आर्ग्यूमेंट है। आपको आपका अपना वर्ल्ड व्यू बिल्कुल इससे जिसे कहते हैं ना वो खत्म हो जाएगा, उसके अपने डिस्ट्रॉय हो उसके जाएगा, अंदर बड़े खत्म हो बड़े जाएगा, हाँ सही डिस्ट्रॉय हो बात है। जाएगा। आप जो इतनी राइट तारीफें, ये वही जो महादिन ने भी स्ट्रीम से पहले जो मैं पॉइंट रेज किया था, एक पॉइंट, राइट। कि फिर आप जो कहते हैं कि ही इज वर्दी ऑफ वर्शिप, तो वो सब कहाँ रहेगा? किस बेसिस पे आप, किस बेसिस पे दावा करोगे कि वो वर्दी ऑफ वर्शिप है? वो बाय वर्च्यू ऑफ हिज एग्जिस्टेंस जो है ना, वो तो पॉइंट हम साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर और कोई भी बेसिस है तो हम उस पर जज करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आई थिंक ये सबसे बुनियादी सवाल है कोई कि मयार ही नहीं है आप हमारे पास उसको गॉड जज को, करने की फिर। तो हाँ। अगर आपके पास मेयार नहीं है किसी को जज करने का, तो फिर आप ये भी, और वो मेयार खुद ही उसने बनाया है, तो फिर उसको जस्ट कहना ये मीनिंगलेस बात है, क्योंकि वो कर वही रहा है जो उसकी मर्जी है सिर्फ, बिल्कुल वो कर रहा है जो उसकी मर्जी है। तो बाकी उसको ऐसे शख्स को जो अपनी मर्जी कर रहा है, कॉस्मिक उस ये कहना कि वो जस्ट है, तो बिल्कुल इससे मीनिंगलेस बात कोई नहीं हो सकती। और आप उससे नेक्स्ट लेवल जाते हो कि ना सिर्फ वो जस्ट है, वो तो मर्सीफुल भी है। और मैं आपको बताऊं कि एक हदीस पे, और एक नहीं, इस पे मल्टीपल यानी सोर्सेस, मल्टीपल तुर्क हैं उस हदीस के, यानी मल्टीपल चेन ऑफ नरेशन से हदीस है कि अगर अल्लाह सबको भी तकलीफ दे दे ना, तो फिर भी वो अनजस्ट नहीं होगा। सबको सबको जहन्नुम में डाल देना, तब भी वो जालिम नहीं होगा। तो ये आप देख लें कि ये दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ देयर जस्टिस। तो मेरे राइट ख्याल राइट। में यही पॉइंट्स हैं। हाँ मेरे ख्याल से इसको आगे चलाने का भी कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है, आगे मेरे के जो ख्याल है इनका यही पॉइंट्स हैं पॉइंट हमने है, ऑलरेडी सब कुछ उनको एड्रेस कर खत्म लिया। कर दिया है, बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है उनको बुरी तरह से। ये बड़ा हाँ कॉस्मिक ने एग्जैक्टली, बल्कि वो पॉइंट मैंने तो कमेंट नहीं पढ़ा था, इत्तेफाक से मैंने वही बात अभी की है। और मैं बल्कि एक इस पर हदीस पे भी लेके आपको लिंक देता हूँ, वो जरा हदीस आप दिखाइएगा तो वो भी आपको हम्म, जरा ये जो बात मैंने किया ये इससे साबित हो जाएगी। हाँ नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कॉस्मिक। हाँ वो पॉइंट ख्याली ने भी रखा कि वो आर्बिट्रेरी हो गया है, मतलब सारे जो आर्बिट्रेरी डिसीजंस है, वर्स्ट ऑफ वर्स्ट इन योर इमेजिनेशन, any decision will be still just by his logic, right? बिल्कुल। ऑलराइट कॉस्मिक, आप नहीं ज्वाइन कर पाओगे, बट या अब काफ़ी टाइम हो गया आपको आए हुए स्ट्रीम में, तो अगर जब भी चांस मिले आप बेशक वेलकम हो, कभी भी आ जाओ आप, है ना। और so we have with us Mahdin. I think Mahdin, we are done with our review. I think we took longer than we thought we would, but there are so many different points. So yeah. Mm-hmm. No, that's good. I You didn't want get to to. add something to? You want to add something to? Yeah. We Mahdin, have sorry. already. Sorry, Hi, go on. welcome to the stream. Welcome to the stream. Mahdin, just give me a minute because I just wanted to show them the hadith that I was just referring to. Okay, go for it. Just give me a Right. minute. Yes, I'll just show it too. हाँ, फाइलो जस्ट ये हदीस खोलें आप।
Alright, can you see it? बिल्कुल, इसमें फोर्थ लाइन में आप देखो, इसको हाईलाइट भी कर दो ताकि ये नजर आ जाए। वर अल्लाह टू, फोर्थ लाइन में देखें आप, वर अल्लाह टू पनिश, नहीं सिर्फ वर अल्लाह टू पनिश एवरीवन इन द हेवंस इन द अर्थ, ही वुड डू सो विदाउट बीइंग अनजस्ट टू देम। यानी कि अगर तो यही बात खत्म हो गई ना, यही बात खत्म हो गई खत्म बेसिकली। हो गई, तो इसका मतलब कि अल्लाह कुछ भी करता रहे बाद में, तो वो भी ये फिर तो भी अनजस्ट, फिर भी जस्टिस ही होगा उसका। तो ये तो हमने जो बात की वो प्रूव हो गई बेसिकली, मतलब उसमें हाँ, ये जो लास्ट हमारा पॉइंट था ख्याली, वो बिल्कुल हो गया, मतलब खत्म हो गया इसमें। राइट। हमारे पास नकली, हम इसको कहते हैं ना, नकली फ्री विल है हमारे पास, नकली अकली दलील और नकली दलील। तो ये नकली दलील है। नकली का मतलब, अगर जिसको उर्दू या हिंदी नहीं आती, वो नकली का मतलब जाली या फेक नहीं होता। अकली मीनिंग होता है लॉजिकल, और नकली मीनिंग होता है स्क्रिप्चरल या टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट, ये जो बेसिक इन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर या टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर हमने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो रखा था, तो साथ मैंने टेक्सचुअल आर्ग्यूमेंट भी रख दिया कि देखिए ये आपके मुताबिक भी जो सवाल है वो बिल्कुल हमारा जायज सवाल है, फेयर सवाल है, कि फिर आप लोग उसको और पुख्ता कर दिया हमने। हाँ, उसको और पुख्ता हमने कर आपको हर किस्म का एविडेंस अब दे दिया। तो आई थिंक मैंने अपने जो सारे, मैं ख्याल बहुत एंगल्स हमने डिस्कस कर लिया, सारे एंगल्स ही डिस्कस हो गए हैं, कुछ शायद मिस हो गए बाद में आएंगे याद, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सारे एंगल्स है हमने डिस्कस कर लिए। महादिन, Hey. You okay? All right, Mahdin. Yes, how are you doing? Yeah. How was the stream? I didn't get to see all of it. Yeah, pretty good. I think we still might have a few of our Hindi-speaking audience, maybe just a few of them, 3 of them so far, as of now, basically. But yeah, what I would do is encourage them to come on if they want to ask any questions regarding this first. Yeah. So I don't think anybody's. What I'll do is I'll make the link public, and I think we'll. ख्याली हम इस स्ट्रीम को शॉर्ट रखेंगे, राइट? आई थिंक इसी वीडियो को यहीं ख़त्म कर देते हैं। देखते हैं अगर कोई आता है ज्वाइन करने और कुछ सवाल रखता है तो हम उसके सवाल ले लेंगे, और नहीं तो फिर इसको कि आप चाहते हो दूसरा वीडियो को भी वो किया जाए। आई थिंक देख लेते हैं, अगर ये क्योंकि 1 घंटा हमें लगा है, तो आई थिंक इतनी स्ट्रीम भी काफ़ी है। दैट्स, और थोड़ा सा अगेन हम क्योंकि थोड़ा सा डीप जाते हैं लॉजिक में, तो लोगों को डाइजेस्ट भी करना होता है। तो इफ अगर हम सिर्फ एक भी देखें तो इट्स फाइन, वरना हम वैसे जो मुफ्ती साहब की एक वीडियो में देख रहा था, अगर हम वी वांट टू रिव्यू दैट, वो भी हम कर सकते हैं। तो बट उसमें हम होपफुली उसमें बहुत सारे एंगल्स भी नहीं है, दिस ये थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल डिस्कशन थी, वी कैन कवर दैट एज वेल, हमारे पास टाइम तो है थोड़ा। ओके, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महादिन भी है अब, तो फिर महादिन अगर हिंदी में करेंगे तो फिर वापस हो जाएगा, राइट? सो सिंस महादिन इज हियर, maybe we'll take up another day, maybe let's say Monday or Tuesday or Friday or whatever, right? Whatever we can find, and we'll do another stream if अगर हमारे पास दोनों के पास एक और स्ट्रीम कर लें, लिंक शेयर कर दिया, लिंक शेयर कर दिया पहले। हाँ, लिंक शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं मीनवाइल अगर जस्ट एक ये जो कमेंट किया कॉस्मिक ने, उसका भी एक जवाब दे दूं। कॉस्मिक कह रहे हैं कि शायद वो हदीस को एज अ स्टीलमैन करना चाह रहे हैं, हदीस जो जो पेश की थी। तो वो कहते हैं कि अगर इस हदीस का शायद ये मतलब हो कि हम इतने गुनाह करते हैं रोजाना कि वैसे तो हम सब के सब जो है वो शायद डिजर्व करते हैं हेल। तो ये अगेन ये जो बात आपने की है ना, इसमें भी बड़ा आपको मुझे थोड़ा सा अगेन इन डेप्थ फिलोसॉफिकल उसमें एंगल देना पड़ेगा, या हमें ना इसको लॉजिकली देखना पड़ेगा कि इसमें भी बहुत बड़ा फ्लॉ है। पॉइंट इज के जो वो हमारे अंदर ये जो कमजोरी है, अगर मैं शॉर्ट करके बोलूं, ये जो कमजोरी है हमारे अंदर कि हमारी टेंडेंसी है इतने गुनाह करने की, या गुनाहों से बच के ना रह पाने की, ये जो टेंडेंसी है ये हमारे अंदर कहाँ से आई है? ये कमजोरी किसने हमारे अंदर रखी है? ठीक है, तो ये जब हमें नेचुरली अल्लाह ने इतना कमजोर बनाया है और साथ स्टैंडर्ड इतना स्ट्रिक्ट रख दिया हो
कि वो कोई उसको पास ही नहीं कर पा रहा हो, तो आप सोचो कि क्या आप इसको फेयर करोगे? अगेन मैं बिल्कुल वो सिंपलेस्ट वाला इनजस्टिस हो गया, वो ऑटोमेटिकली वही खुद इनजस्टिस हो गया ये बेसिकली। टेंडेंसी टू सिन, ये कमजोरी हमारे अंदर, ये किसने रखी है? ये भी अल्लाह ने रखी है। और अब जब उसको जज करने के लिए कि हम इससे कितना इससे जो है ना स्ट्रगल कर सकते हैं, कितना अपने आप को अपनी इस टेंडेंसी से फाइट करके हम नेकी, हम जिसे कहते हैं ना कि गुनाह से बच सकते हैं, उसका जो टेस्ट अल्लाह ने रखा है, अगर वो शदीद बहुत सख्त हो और हमारा जो जिसे कहते हैं कैपेबिलिटी बहुत कम हो, तो फिर तो हमारा जो हम बोलेंगे ये टेस्ट ही कैसा है, बहुत ही अनफेयर टेस्ट है। और उस अब टेस्ट इस को हाँ, उस टेस्ट को हम किसी भी टेस्ट को हम कैसे जज करेंगे? अगर एक टेस्ट में मैं देख रहा हूँ कि यार ये टेस्ट मैंने ऐसा बनाया है कि इसमें कोई पास ही नहीं होता, वही, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली मैं यही कोई कहना पास चाह नहीं रहा होता है इस टेस्ट में, तो फिर हूँ। हमारे पास इससे ज्यादा अच्छा और क्या बेसिस होगा ये समझने का कि यार ये टेस्ट इज अनरीजनेबली हार्ड, कोई तो पास करे ना उसको यार, राइट, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि तो आपने ये चौथी, सॉरी गो अहेड। नहीं मेरी बात हो गई, मैं बहुत नहीं, लंबा मैं ये नहीं। कहना चाह रहा था कि आपने मैथ एग्जाम तो दे रहे हैं आपने चौथी क्लास का, राइट? चौथी क्लास के बच्चों को आप मैथ ओलंपियाड के सवाल आके कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, राइट? आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो उस तरह के सवाल बिल्कुल सही सॉल्व एनालॉजी आपकी। यानी इट्स लाइक कि तो हम थर्ड क्लास के बच्चों को जो है ना वो 10th ग्रेड के या हाई स्कूल लेवल की मैथ का एग्जाम दे दें और बोलें यार देखो ये तो टेस्ट इन्होंने फेल कर लिया, अब मैं क्या करूं? तो फेल कर लिया इन्होंने, देखो कितना गंदा एग्जाम दिया। तो भाई आप बोलोगे यार कि ये आपने जिसका टेस्ट लिया है, जिस तरह का उसको टेस्ट दिया है, डिडंट यू नो कि इनकी कैपेबिलिटी है क्या? तो राइट, क्या एग्जैक्टली, आप ये या वाज इट फेयर टू इवन गिव देम दिस काइंड ऑफ टेस्ट? तो यही बेसिकली सवाल उठता है। तो आई थिंक मैंने होपफुली हमने कॉस्मिक के इस स्टील मैन वर्जन को भी देख लिया। हाँ तो ये राइट, बेसिक क्वेश्चन है कॉस्मिक, कि वो डिसाइड ही करता है। और यहीं पर हमारा जो लास्ट जो हमने और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि यही हमने क्वेश्चन किया है कि भाई ठीक है, फिर आप जस्ट कहना मीनिंगलेस है। वो ये जो बात है ना कि आपने जो पॉइंट रखा है, ये दिस इज अ मीनिंगलेस स्टेटमेंट एक्चुअली, कि गॉड डिसाइड्स व्हाट इज जस्ट। गॉड व्हाट इज जस्ट जो है ना वो दैट बिकम्स अ मीनिंगलेस क्वेश्चन है। गॉड राइट, does whatever he wants, that should be the statement. it's it's an ये कहना चाहिए हमें। arbitrariness, right, basically. जैसे ये मुसलमान कहते भी हैं कि अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता, तो फिर यही कहा करें बस आप कि अल्लाह को कोई नहीं पूछ सकता। Right. Mahdin. Sorry Mahdin. Yes. Oh, it's Yes, fine. It's fine. Go ahead. It's a Hindi stream, so we want to be comprehensive for everybody who is listening in Hindi, Urdu rather than English. So as long as you guys you feel like you've done everything so far, and unless you don't, if you want to say a few more things, I really just want to comment in English, obviously, because that's the only thing I know. At the end, like basically, we're ready to finish, like when we're pretty much want to go. So you let me know if you guys are at that point. No, yes, I think we have covered almost everything. I don't see Right. I cannot think of any other angle to respond to this video. Okay. All right. You've got another comment though, so if you want to. Cosmic, why don't you join us and then maybe have a conversation? He said he's busy today or something. Yeah. Oh, okay. He's probably at work right now, so he can't come and talk. Yeah. Honestly, I did not watch Avas and Cass's debate because I think I was not expecting much from the debate, honestly. So I did not watch, I think, even a minute of that debate. So yeah, I mean, I did see the debate in part, basically, but not really enthusiastically. I thought Avis didn't handle I mean, I shouldn't comment on it. Yeah, basically. let's not comment on it. Let's not even comment if you don't want to discuss it. Yeah. So in short, we didn't watch the debate that much to comment on it. Right. In my case, I was not expecting much. That's why, and also because I'm very annoyed by Cass's the kind of logics he present, and generally the kind of arguments that he presents. So I'm a bit annoyed, and I'm not able to bear with him. And also, I was not expecting
a good debate on evolution by two people who are laymen. None of them are scientists or even I would even not even professors of biology or evolution or any kind of none of them are any kind of in-depth knowledge of this field. So I was not expecting much. That's my response. All right, Mahdin, please go ahead and share your comments. Were you able to understand the gist of it, right? We gave you the gist. I think you guys have covered a lot, and I'm probably going to be repeating many things, but I'll just try and come out from different angles, maybe, perhaps. Sure. Yeah, what I would say, based on what I think the video has talked about, is that, first of all, whether something is just or unjust cannot just be made, as you guys have already acknowledged, arbitrarily. And I'll use like an intuitive thought experiment to explain this. Suppose a manufacturer or creator of something creates a object, a contraptment, some sort of machinery. Let's say it's like a car or a computer, or let's say it's something like anything. It could be like a vending machine, anything. The best way that machine operates, the best way that machine functions, is not up to the creator to decide after he's created it. So keep that in mind. So once a person has created something, let's say you created a car, the best way you look after a car, what is, here's the word, good for the car, is not something that the manufacturer of the car can decide after he's created the car. Whatever is good for the car is something that you can independently derive from understanding the machinery, the complexity, the makeup, the composition of the car. For example, the car needs to have its exhaust maintained and changed. It needs oil or diesel or petrol, whatever it is. It needs, it works good with X tires and it doesn't work good with different types of tires. If you don't change something in the car at the right time, it'll break down. That's bad for the car, right? So whatever is good for the car and whatever is bad for the car can be understood by looking at the anatomy of the car, looking at the behavior of the car, looking at the complexities of the car. The creator of the car can't arbitrarily or just make it up and say, well, changing the oil of the car is not bad for the car. Well, that doesn't make sense. If you don't change the oil, the petrol, the gas, whatever you want to call it, the car will not function. And if it doesn't function, it'll break down and it won't work. That is the same mentality I would like to take for the idea that God can arbitrarily or subjectively come out with his own ideas as to what is just for humans or animals, or what is unjust for humans or animals. Whatever is right for the animal or us, it stands independently to his whims, his feelings, right? For example, if I don't drink water, that's going to be bad for me. If humans don't drink water, that's going to be bad for humans. If animals don't drink water, that will be bad for animals, right? If God designed us, he can't just subjectively then make a statement through fiat, like a legislator. That's what we're trying to think here. He's like the legislator. He just legislates arbitrarily and says, well, I make up what is good for you or bad for you. Well, not really. Even he has to realize that not drinking water and remaining hydrated is bad for humans. And he can't just say the opposite. If he says the opposite, that's false. And that's the same sort of, it's another thought experiment to explain the arbitrariness of God being this kind of whimsical, arbitrary, tyrannical almost legislator who just makes up what is good and bad. In fact, what is good and bad is based on human nature or animal nature or sentience of the creatures involved. And we can discover that independently to whatever God decides. And so God just can't simply say a piece of coal is valuable and it's just. Well, why? Not this particular coal. Let's say in this universe, there's just one piece of coal and it's eroding. Well, preserving this coal is valuable. The question will be why. Well, is it bad for the coal? Is it what's going on? Or not? Kicking a rock or kicking the coal, let's say, or kicking a rock is bad, right? On the other hand, if
you have a cat or a chicken or a cow in front of you, kicking the cow is bad for the cow. Why? Because it feels pain, it suffers, it doesn't like it, etc. And it's not good for the cow in that situation. So again, all of these thought experiments show that he can't just make up what is just and unjust. After we have this particular physiology, he has to also abide by what is correct. And guess what? This is more objective in the sense that if it was the case that God, just like a legislator, makes up what is just and unjust, then what do we have there? We have subjective morality, right? When you have objective morality, it won't be dependent upon the whims, the beliefs, or feelings of one particular mind. It will be independent to a mind, right? The fact that harming human beings by like throwing acid in the face of a human being or acid on the face of a cow harms them, and this is bad for them, remains to be independently true, irrespective of one individual's belief. Right? So that's closer, I would submit, to objective morality, because we can't just make it up. We have to look at the species in question and find out what is actually good for it versus what is actually bad for it. Whereas if one individual just made it up at whim by clicking his finger or throwing a coin, then it's just subjective, arbitrary. So what I'm trying to say is this sort of model of morality is actually is the very definition of everything that theists want to condemn amongst atheists. This is the very definition of subjective morality, this arbitrary model of God. Okay? Right. Yeah. All no, right. If you guys want to say, do you want to add more points, or? I think you guys probably have covered the rest. I mean, have you covered the stuff about suffering and so on? Like that's like an empirical question whether animals suffer. I'm sure you guys have already. No, Yes, I think we haven't suffered the point Yeah. that animals do suffer or not. I mean, that's I think we kind of We took it as a given. went past that point. Basically, we didn't touch that point in detail. Basically, but yeah, go ahead, and that's a very valid point. Basically, or what I'm gonna do is I'm gonna say it in Hindi if possible, or maybe we shouldn't. And since we are carrying on in English, let's just carry continue on in in English. right? Otherwise, it's gonna be a khichdi, not even a Khayalie Pulao. It's gonna be a khichdi. I had a weird dream last night. I found out in my dream that Khayalie Pulao is actually Khayalie Pulao's name on his birth certificate. I don't know why. That's his actual name. That's all I remember from the dream. It's weird. He showed me his birth certificate, Khayalie Pulao. I was like, what? Okay. Okay, this is not a disguise. His parents would have been really in immense love with Pulao to name him Khayalie Pulao. Right. Yeah. Well, there's a funny story. Probably it's made up. Just about breaking a name into first name and the last name. So there's a name in. It's not very common nowadays, but in the rural areas, it used to be a common name, which was Allah Ditta. Philo, I'm not sure if you might be aware of this. Allah Ditta means Allah, God given, actually. So it's like name God given. So when someone was trying to break it down, so they were filling up a form, probably a visa form or something. So they broke it down into two. The first name was Allah, and the second was Ditta. And they were like, "What kind of name is Allah first name? Who's naming people Allah?" So this came up. I called this particular joke. So but just to tell you guys, no, that's not my real name. Right. Yeah. Imagine if it was your child name going to be Pulao, last name Pulao. I think in some countries it's illegal, right, Mahdin, to have in some countries it's illegal to have weird name, to give weird names to your children. Yeah, you cannot it is. give very weird names to your children.
Yeah, even in the United Kingdom, it is. You can't, for example, have a religiously offensive. It's very, very old-fashioned and arbitrary, the law. In other words, this is like a law that's not been advanced. All right. Yeah, Khayalie, your point is supported by your anecdote is supported by USS. Yeah. And he's saying it's still common name in rurals in Yeah, it is. Punjab. It is. Basically. Maybe it is. Yeah. Yeah. Yeah, you All can't right, have. You can't have. Mahdin, you want to go ahead and then just Yeah, I briefly will. touch upon those, I why will do. animals have the capacities to suffer, Yeah. right? Just to quickly mention though, like what Khayalie said, you can't have an offensive name in the UK. Like it can't be like a swear word, and it can't be like religiously offensive. So you can't have something like God sucks or something like that. I'm not completely familiar with that area of law entirely, but I do know that something like that is the case, and it's not been updated properly. And I think it's like a gap in the law, because there's serious philosophical questions you can raise about why it should be like that, because it's inconsistent as well. What is offensive? Naming somebody Isa could be offensive to another person, but maybe there's practical aspects to it, because if you name your child, let's say, son of a bitch, right? Yeah, that would be like. I don't think that would be offensive. That would be really confusing. Who are you calling, man? If you're in a market and if you really shouted, everybody would be, hey, did you call me? Did you call me? Did you call me? Yeah. And I think also there is some sort of limitation that, these kinds of laws also put a restriction on naming people. Like you cannot name a person like chair or table, or I think some sort of very weird name as well. But I think how the law probably ends up being implemented is people can actually get their names changed later on, probably. Yeah. But actually they have a right to a good name, probably. I think it's also a right to have a name. It's also a basic right? I think, to have a name, to have a probably. I'm saying it's a good name or a. It opens a can of worms though, because suppose you do have such as, which is not a profanity, not an obvious profanity or obvious offensive statement or something. When I say obvious, the accepted, this is very, very subjective. Like what is obvious? I think stuff like son of a bitch, whilst we know it's conventionally we know this is a bad thing, right? It means something bad or whatever. It's just put arbitrarily in this category, whereas everything else is acceptable. But you can have like a general name like that is from a different language, different country, different origin, but it doesn't have the greatest meaning, right? It might mean something like servant of God, and some people might say that's a good thing. Other people might think that's a bad thing. Why am I? Because, for example, an atheist may think I don't want to be a servant of God. In fact, I think this is more offensive to me than son of a bitch. Maybe there are ex-Muslims. There are like many ex-Muslims with the name Abdullah. Yes, yeah, Abdullah. Which is what it means, right? Servant of Allah or slave of Allah. And then there's other issues like something you might be named after a plant. There's lots of Arabic names that don't have any honorable meaning. Like, it's just like something like you guys probably know better than I do. Like I've heard names that they translate to something like plant. It means plant. And why am I a plant again? Sorry, that could be offensive to somebody. There's a popular name Aqib, which means the one who comes behind, like the last one, the ones who come last one, right? So why is that a good thing? So imagine if somebody read that your name is the loser, the last one. The last one who has led the whole team. The last one who's led the whole team. I think it's extremely subjective and hard to regulate. And but you can understand the practical considerations, right? Like I think people would just be more dumbfounded if a child is named son of a bitch versus Aqib, because we don't know the meanings, but it's very subjective, and I don't know how to resolve that and get like have a consistent sort of standard or framework where it has to be honorable names. Either be consistent and figure out which names are honorable in the honorable pile, or you're gonna end up. That's even more dangerous, right? I mean, then you are just putting a very restricted list where which can be used. It's you cannot go there. I think it's a bit more. It's hard to do. Yeah, at this moment,
Yeah, at this moment it occurs on a case-by-case basis, so it's already kind of doing that, right? Every time somebody goes, you know what, to resolve all these things, the best person would be God, if he existed, right? And then every child when being born would have their names. If it's two part on the both the cheeks, it would be written basically on the butt cheeks, by the way. Yeah, stamped on the butt cheeks. Yeah. yeah. All right, Mahdin, go ahead. Yeah, so we are Saeed here, by the way, if you've not noticed. Yeah. We have. Yeah. I mean, you noticed, and Philo probably allowed him to get up. So I was the only one left to notice, and I have. Right. We should change Saeed's name as well, right? We should give him a nickname. Saeed's name is the most weird Murtād. And the weird. The statement that you have, we don't want to go into detail, but just the statement that you have all religion believe in Allah except atheists. Well, I think that is the definition of atheist, so I'm not sure what you're trying to say over there. No, all religion believe in a creator, The creator, okay, but that's Allah not what you've means written out. What that's not, you have mentioned Allah, right? So I'm just saying that. But let's not go into detail. I don't want to go into that detail. But I just wrote all religion believe in Allah. Allah means a creator who make things. So every religion believe in God, So they make a believer in. By definition. By definition, everybody believe in. By definition, they believe in it. Yes. So except atheists do not believe in that. Yeah, that's why. Okay. Is it true though that all religions believe in God? Not all religions believe in God, though. Not all religions believe in God. You're right. All theistic religions believe in God. Maybe Buddhists may not believe in, but all religion believe in God. Right. See, now you already found an exception by yourself, right? You have to add a few more exceptions, right? Yeah, but you can't say Buddhism is not a religion because. No, we are saying it's a religion. Mahdin pointed out it is a religion, and therefore there's a religion without belief in God. But is it atheism is a religion? It's not. No. It's not, because you don't believe in God. If we are pointing out the problem with your statement. They are not a religion. They have a way of life, but they are not religion. Yes, sir. Is theism a religion? Theism? Yes, I think. Theism is who believe in God, right? Which religion is theism? Deism? Theism. Yeah, theism. Islam is a theist, right? Muslim is theism. Islam is a particular is a branch of theism, right? Yeah. Is a branch of theism, right? So is theism, that's the superset of all theists or religions, basically. Is it a religion itself, right? That's what Mahdin's question is. If you're talking about religions versus atheism, you can't compare those two, because atheism compares directly to theism, basically, right? It doesn't compare with Islam, Christianity, or any other religions, basically, right? There are theists who don't believe in a religion. They are generally called, one of them at least, are deists, right? So deists are theists, but they don't believe in religion. So so there are examples where people believe in religion, God without a religion. So your statement is wrong in many ways. We have discussed a few angles. Overall, I'm correct. But and you, I think there is not any angle. What about Taoism? Taoism. So, have you heard of Taoism? I might be mispronouncing it. The religion. No, it's Taoism. It's Taoism. What it means. What does it mean? What is it? What are you asking me? Yeah. Oh, I asked Saeed. I think Taoism is they believe in God, I guess. Taoism? Taoism. They don't. I'm not sure. I think they don't believe in an anthropomorphic, interpersonal, intervening deity of a person or personal nature. They believe in stuff like some sort of force
but it's not Allah. But the force is God. That's the No, God no, is no. just No, a it's force. the nature. You cannot. It's the nature. I mean, you can Taoism is name is it. the living in the harmony with the nature. Basically, that's what Taoism is, right? In Islam, Allah is a very specific being, right? It's a person with certain desires. No, he doesn't have desire, but he's a creator. Come There you go, on, right. Saeed, come on. Do you have? Okay. Saeed You don't have memory loss, right? साइद Yeah. भाई You don't have मेरा memory एक loss. डिसअपॉइंटमेंट आपसे शेयर करना चाहूंगा. सॉरी ख्याली, एक मिनट में रोकता हूँ आपको. है आपके साथ एक डिसअपॉइंटमेंट शेयर. आप हमारी स्ट्रीम नहीं सुनते हैं, राइट? और फिर No, आपको हमें हर स्ट्रीम में हम आपको नई चीजें बताते हैं एटलीस्ट, और हमें भी फिर भी आप इतना हेट करते हो सारे, है ना? हम सारे जहन्नमी हैं, ठीक है? यहाँ पे no. है ना, हम सारे जहन्नमी हैं, और no, फिर भी नहीं, आप हमसे नहीं बात मानते. करने आते हो. I do not नहीं, hate. फाइलो, मैं सॉरी मैं एक बात बता दूं उस सईद फाइलो को. According to Saeed, atheists are not necessarily going to go to hell. I think so. But he thinks that some Muslims are definitely going to hell, but not atheists. No. Right? Atheists, Allah said atheists will go to hell. Regardless how good you are, how good you do things in this world, you are going to go hell. Okay. राइट. सो हम सारे जहन्नमी हुए हैं ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ. हम हमें जहन्नमी और फिर कह भी आप हमसे सबसे ज्यादा अच्छे से बात करते हो, राइट? You know, this is just a belief system. आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लग रहा है? No. आपको तो You जाना know, you चाहिए talk to me nicely, I talk to मुफ्ती you वाजिदी के nicely. So पास जाना चाहिए आपको, है ना? नहीं? No. So is it no. So Saeed, is it about belief or is it about deeds? no. नहीं, बिलीफ्स की बात कर दी on ना what उन्होंने, तो basis? सीधे बिलीफ्स की बात कर दी. Because Deeds he also mentioned good deeds. Yes, So yes. what my deeds question तो is, if we जो do बिलीव good करते हैं deeds, उनके लिए. no, he mentioned good deeds as well just right now. So what I'm Yes, saying is, yes. what my question is this: so if I do good deeds, can I go to heaven, or No. do I need to believe in? No. Allah required two things. One is to believe in God, Creator, and another thing you should be doing good deeds. Right. So both are needed. So what if people don't do good deeds but believe in God? Are they No. equal? They also go to hell. Okay. They're equally bad as people who don't believe but do good deeds. If a Muslim believe in God, but he does not do good thing, then he probably doing the evil thing. So he will go to hell. And if a person, what I'm saying is, do these two things have equal weight? So is a person who believes but does not do good deeds equal to the person who does not believe and does good deeds? Do you understand the question? You just cannot do in this world. सही समझो, सवाल समझे आप मेरा? Yes. Did you get my question? दो Yes. लोग हैं, अगर एक बंदा उसका बिलीफ तो है लेकिन वो काम अच्छे नहीं करता, और एक बंदा है जिसका बिलीफ नहीं है लेकिन वो काम अच्छे करता है, क्या ये दोनों बराबर हैं? No. First of all, ख्याली, ये तो हदीसों से साबित है ना, ये तो कि भाई बंदा यार जो वो है सईद अगर साहब तो स्टोरी छोड़ नहीं देना, पढ़े, वो तो बैड हदीस हो हाँ. सकती है ना, तो वो छोड़ दो. मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ. वो I don't have any idea what सही right. people, they do, all human beings do good and bad. Okay, that's what God, Allah said. He will check the scale. Whose scale is Right, good, but heavy. no. So you're saying, Mahdin, what is the you need to mute Matt. Yeah. Too much. Yeah. But so you're saying it depends on the deeds then, कि वो Yes. deeds कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं. Yes. अगर किसी ने छोटे सिन किए, लेट्स से किसी बिलीवर ने बहुत बड़े सिन किए, बहुत बुरे काम किए, तो फिर his scale is heavy, so he will go to hell. then he's worse than a person who doesn't believe. He's equal. Allah said he is not a believer when he do evil. So let's say, let me give you an example. A Muslim actually killed 1,000 people, right? He's on a killing spree. He's a serial killer. Take example of Hitler. He converted to Islam just before dying. Yeah, let's say, yeah. No, that is not just before dying, because in that case it would count as repentance. So what I'm saying is, let's say a person like Hitler was Muslim and he did all these deeds, bad deeds,
and there's a person, an atheist who never he never harmed anyone, but he does not believe in God. Do you think both are equal, Both or will, one is better than the other no, in the eyes of both God? will go to hell. Both will go to hell. Both are equal then. Yes, they are equal, and both will deserve hell. Right. You know, Allah said, when you do it evil all your life, when you are get old, then you say, now I won't do any evil thing. Allah will not forgive. They will go to hell because they have done all their life evil thing, and now in the old age they see they cannot enjoy life. Now I'm going to be doing good things. Allah said, no, you go to hell. So you basically you are worshipping a tyrant, right? Like a dictator. Exactly. I was thinking. Yeah, he's a tyrant. If you want to say God is a tyrant, because he dictates. You know the North Korean dictator. He also asks for complete worship and subservience to himself. You have to dedicate your life to him. It's not about deeds. It's just about his selfish desires. He's like a narcissist, and he wants you to obey him. Yeah. Whatever, kiss his hand, kiss his feet. It's not about the good actions. So what would the North Korean dictator do? Well, if you don't kiss his ass, he will put you in jail. It doesn't matter how good of a person you are. For example, if you give charity, you love people, you are a humanitarian, you spend an amazing life helping people. You are the most charitable person. You're a saint. It doesn't matter. The North Korean dictator says, nope, you're going to go to jail forever because you did not kiss my ass. So the only criteria for you, Saeed, is for goodness. Or when you say God is good or God is great, all you mean is God is a tyrant. You know, God, how is that good? How is that a good thing? Okay. You know, God, what says God? Don't lie, don't hurt others, don't steal, don't verbally abuse other people. That's what God telling human to do. But Saeed, you will be thrown in the North Korean jail. What's that? You just said whether you are a nice person, whether you don't steal, whether you give charity, whether you help people, you will be deserving of eternal punishment, which is similar to the tyrant. Doesn't matter whether you're a nice person, whether you give charity. The North Korean dictator, what's his name? Kim whatever. Which is the new one now? He's got Kim Jong-il. He will put you in jail even if you're a nice person. So it's not about the deeds. It's not about your actions. It's not about whether you're a benevolent person. It's all about submitting yourself to this tyrant. So that is the only criteria you have. But that's tyrant telling you to be nice to other human being. That's Said, what he's telling me. So you're saying if God says only you go and make a sajda over me and I don't care you Said, you're always 1 minute. Said, you're always missing the point. You just said to Khayalie 5 minutes ago that doesn't matter whether you're a good person. Am I right? Maybe you said it in Urdu. Atheists, regardless how good they are, they will go to hell because they one requirement they are not doing, which is to believe in Creator. Saeed भाई, आपकी बातों में contradiction है, आप देख रहे हो या नहीं? Can you see the contradiction in your statements just you made about a minute back and then 5 minutes back? आपने जो 2 statements बनाए हैं, आप उसमें contradiction देख रहे हो कि नहीं? He wants you to be good, but then he doesn't want you to be good, right? What's that? He wants you to be good to others. It's not just that. What I'm trying to say to you, Saeed, is that in respect to this situation, God's primary goal is like the North Korean dictator. Worship is a necessary condition to be rewarded and avoid hellfire.
deeds are not necessary, right? Deeds might help. However, his main priority is not deeds, it's whether you kiss his ass every day. How is that a good thing? No, Allah, No. I already told you, there is a two requirement to go to Jannah. One is to be believe in Creator. Another is to be nice to other people, not to do evil Eventually, things. though, Yeah, no, yeah. you know, No, eventually, Mahdin, just to be fair, Yeah. what he said was that, and I think that is what I understood. He said that a person who believes, but a believer who does like Hitler, a believer who acts like a Hitler, is equal to a person who doesn't believe but has not done any bad Has deed done or good has done deeds. a lot of Has good done deeds. good deeds. So he Yeah. says that both of them actually fail one criteria, right? So one of them fails the good deed criteria and one of them fails the believing criteria. So that's why he's saying that the ultimate. So Yeah, no, he's that's fine. therefore he's treating them both equally, right? What I'm saying though, that means He's placing what equal that, weightage on both of these. He's placing equal Right. weightage of both of these criteria. But what I'm saying is that if somebody doesn't believe, then it doesn't matter how many good deeds they do, right? They will go to hell. What I'm trying to say, therefore, is that it's a necessary condition to go to heaven and avoid hellfire that you must believe, right? Yes, Yes. both are Exactly. necessary So, conditions, Mahdin, according to me. it might not be a necessary condition that you have to do good deeds because to be a Muslim, you can be a crappy Muslim, but you still eventually go to heaven. No, those According are to hadith. Saeed, that is not the case. Those are According to hadith. Saeed, Yeah, I think we'll Yeah. go with what Yeah. Saeed is saying, even Okay, though according to I'm Saeed, not that is quite not the sure. case. Yeah, His worldview is not in line with the Orthodox Muslims. That we are Okay. yeah, not even I'm he not does quite not agree sure. with Muslims. Yes. I do Khayalie, I'm not not agree. quite sure. Yes. Hold on, Saeed bhai, hold on. I don't think this view is found. So Khayalie, is there? I think we covered this in our stream where we talked about can Muslims go to hell for eternity? It's a very fringe view there that Very friendly. some Muslims can be in hell and for eternity. It's a very fringe view, by the way. Majority Yes. view is that at some point or the other, everybody who has the belief in Allah Yeah. or God, one true And God, Muhammad. quote unquote, they'll go to heaven. So In what Islam. Said Bhai is espousing is a very, very fringe view, basically. And I'm not even sure where he, in which books it comes from, basically. Do you know? Or Said Bhai, do you know which books it comes? My belief came from Quran. In Allah, I will tell you what Allah said. But one place Allah said, I will keep the people of hell forever. Okay, and another place Allah said, I will keep them how long I want. Okay, as He wish. Okay, that. Yeah. How do you same know with, his same with wish? How do you know how long he wants? No, that because Allah does not want to be bound for Are you something. trying No, to be are you trying to be Allah? No, Philo. Let him No. let him complete I'm his point. talking about the So Quran. yes. Okay, Okay. it's in the Quran. It Yes. says the people will be in forever, or other place. Allah said, as I wish. How long they're gonna be stay there? Yeah, Same. That Khayalie, is I'm one saying verse point only. number Yes. two is no, it's yeah, point number two is not valid here. That's what I'm Yeah. saying. Point number I've- one is so where is it? What's Say the that is your reference? point. No. So that is your point. You're saying that at one place, and it's not one place. At 99% of the cases where these words, where hell has been mentioned, it says hell or heaven. Both of them has been mentioned as it has been used with the word khalidina fiha, which means, and somewhere and in some places it mentions khalidina fiha abada. Even khalidina fiha means a place. It's an eternal place. But if we add the word abada, which is there, which has been used for both heaven and hell, both of these, so abada even adds further, it's further strengthens the point that it's forever. Now, in one verse, only in one verse in the entire Quran, which you are referring to, where it's mentioned that they'll be in hell till forever unless Allah wills otherwise, right? Yes. The point is this:
this is meaningless. By the way, this verse is meaningless No, as well. the- Once Allah- you say no, listen. Once if I say that, Saeed, you will be in hell forever, except if I decide otherwise. Okay. Are you saying that my decision will change? Yes. Now, as a human, my decision can change. A God's decision cannot change because he knows what he will decide. He always knows what he will decide. An all-knowing God cannot change his decision No. in future. Okay, so that But statement for God is, the- listen, that statement for God is meaningless if God says that you will be in hell forever, except if I decide otherwise. Well, will he be in hell or not? You have to decide then. So that Yes. doesn't. It's this statement is meaningless, and that is a contradiction within that verse. Okay. About heaven also, Allah says same thing. You're gonna stay in heaven forever, and but next verse Allah says, as I wish. That means Allah could destroy the whole human being, and bring the another creature. So Allah does not. Why Allah saying this? Because Allah does not want to be bound So to these something. verses only. Come on. So what do you mean by Allah does not want to be bound by his own word? If he does not want Yeah, to be Yes, bound he by does his not own bound words, by seems more something. like then it's don't talking use about those some words. petulant Allah does child, not, basically. Allah does not need to be bound by those words. He can easily have, he can easily not be bound by those words by not saying those words, right? So No, you are saying he Allah first bounds himself. No, listen, Allah, it's nothing but it's just a what do you call it? What's called, a trap door, meaning, I mean, it's just a way for Allah to escape. I mean, whoever wrote the Quran, it's a very strange thing. I mean, the entire Quran speaks of eternal hell and eternal heaven, and in one verse, I don't know in what mood the writer of Quran was on that day, that it's just a hint. It's just a very slight hint that that Allah says that, okay, hell and heaven will be eternal, except they'll be in hell or heaven in eternally, except if Allah wills otherwise. Well, what is Allah's will? Will is will going to change? As I Yes. mentioned, that is logically impossible for a being like God, who's Yes, an all-knowing being. So it does not make sense what you're saying, and I don't think we need to go into it any further. Yeah, but that's what Allah does not want to be bound by things. By his own Saeed, word. By Saeed, his own word. Yes. Have you thought about that? You are you're making a very, very new breed of Islam, and No, but this is in the Quran. This is in the Quran. No, and Mahdin, sorry, I would like to point out, and I'll be fair with you. Quran, if you read the Quran, if you just read the Quran and you ignore the Hadith, I think what you should conclude is that hell and heaven are eternal, and anybody that goes to hell will be in there forever. Anybody that go to heaven will be there forever. That is what you should conclude from it. And also, if you read the Quran, I'll also give you that if you just read the Quran, then both belief and deeds are important, not just belief. According to Quran, belief is not enough. It is, at least from the reading of the entire Quran, and majority of its verses, it refers to believing and doing good deeds. So it's a very common verse that those who believe and do good deeds, those who believe and do good deeds. Yes. So often belief is indeed accompanied by good deeds in the Quran. So and it's very, if you don't consider Hadith, actually, you'll actually end up with the belief that even Muslims, number one, can end up in eternal hell. Number two, there is no there's not a slight mention of anyone getting out of hell, which means the option that the belief that Muslims have about Muslims will be in hell for in order to pay for their sins, and then they'll be sent to heaven. That view is not, technically speaking, a Quranic view. No, They cannot get it from it's Quran. not. In fact, Quran says
that it will be based on the basis of the weight of your deeds and your belief, of course. So whichever weight is greater, you'll end up on that side. So if you have good deeds, the weight of your good deeds is greater than the weight of your bad deeds, then you'll end up in heaven. That's all. The good deeds will cancel out the bad deeds. So that is how, but that is what the Quranic view is. If you read the Quran just with a neutral view, without without the baggage of hadiths, that is what you'll end up with. And I'll give you that because I have read the Quran with that view, and I totally agree with you in that regard. But when you try to escape with that particular verse, I think that particular verse is very that is a logical flaw. It doesn't make sense at all, because when you're saying this throughout the Quran that hell is eternal, heaven is eternal, and in one point you say, well, it is eternal except if I will otherwise. If I will otherwise, what do you mean? What is your will? You have what about everything? Every time you mention every other verse in the Quran which mentions that hell and heaven are eternal. So yeah, that's what. But my understanding, God does not want to be bound by something. Okay, by his own word. God bound by his own word. By his own words. Okay. It's a very ridiculous, it's an illogical statement. I would say God could, not be restricted by not saying that God, hell or heaven is eternal. Then just say God, hell or heaven is not eternal, and I'll decide who will be in hell eternally and who will be in hell, heaven eternally, or who will be in hell eternally. No, it's he up to want me. to make That's all he could have said. He's just contradicting himself. He is just contradicting himself. That's all. Yeah, he just There's nothing else you could conclude from it. There's nothing else you could conclude from it. Yes, he want to escape people. So that's why he said, "I'm gonna keep you there." Escape people. You're a human being. Okay. So he also don't want to bound by his things. He want to be boundless. Mm-hmm. Yeah, so he's boundless as well. So he can also, he is not bounded by his own words. So he can also end up, throwing everyone who believes in hell, and he can also throw everyone who doesn't believe in heaven, right? He's not bound by his own words. So what would happen is that what you just said, that those who believe will end up in heaven, believe and do good deeds. Those are the people who will end up in heaven. But since God is not bound by his own words, in the afterlife, what could happen is that he could throw everyone who doesn't believe and has never done a single good deed. He could throw such people in heaven, and the people who believed and did all the good deeds, he could throw all of them in hell, right? Right, Saeed? I don't think Saeed got that point. I wasn't following you. What are you not following? I don't think. It's a very simple point. You said that he does not want to be bound by his own word. Flipped than what you think is true. Simple, Saeed. What I'm saying is, simple is let me tell you it the in case Urdu. that you think is can be reversed, basically. आप कह रहे हो कि अल्लाह अपने वर्ड से बाउंड नहीं होना चाहता, तो ठीक है, फिर वो अपने वर्ड से बाउंड नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग बिलीवर्स हैं वो उसको अल्लाह जो है वो दोज़ख में फेंक दे, और जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको अल्लाह जन्नत में फेंक दे। वो बोलेगा मैं बाउंड नहीं हूँ, मैंने कहा था बट मेरी मर्जी है, मैं उसको जन्नत में भी फेंक सकता हूँ। जो नॉन बिलीवर था और जिसने सारे बुरे, हिटलर को जन्नत में फेंक सकता हूँ, सारे एथियस्ट को भी जन्नत में डाल देता हूँ, और सारे क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं भाई? सबसे बड़ा मक्कार कौन है आखिर? नहीं, मक्कार तो छोड़ दो, वो तो बाउंड ही नहीं ना अपने वर्ड से। तो he is not bound by his own words. You said that he does not want to be bound by his own words. You see, let me give you some. Allah said, I will keep you in heaven forever. Allah does not want to keep. What if Allah does not want to keep human, keep them life? No. Sorry. मैं यहाँ पर इसलिए रोक रहा हूँ. Just Allah have also said in the Quran that I'll send those who I wish in heaven and those who I wish in hell. Are there verses like that in the Quran? Wish? No. Wish is not wish. Wills. Okay, wills. You go heaven because of your deeds. No. If you are go there hell, verses in exactly because of your there is So then, are there verses in the Quran which states the exact wordings of which are that he sends those who wills to heaven and sends those who wills to hell?
Are there verses like this in the Quran? Yes, there are. Yeah, I think so. But Yes, there are. Okay. No, because that is the formula that you're applying on the eternality of the hell and heaven, because he could will otherwise. What I'm saying is, then if he have said similar wordings for about his choice to throw people in hell or heaven, यानी कि अगर उसने इसी तरह के अल्फाज अपनी इस बारे में भी इस्तेमाल किए हैं कि वो किसको जन्नत में और दोज़ख में फेंकेगा, तो फिर यही चीज आप कह रहे हो कि उसकी कितना टाइम है उस पर आप अप्लाई कर रहे हो अगर ये लॉजिक, तो मैं इसी लॉजिक पे अप्लाई कर रहा हूँ कि यही लॉजिक इस चीज पर भी अप्लाई हो सकती है कि उसने किसको जन्नत में किसको दोज़ख में फेंकना है, वो ठीक है, उसकी मर्जी है, वो अपने वर्ड से बाउंड नहीं होना चाहता, तो ठीक है, वो वहां पर भी उसने अपने लिए एक स्केप एक रास्ता छोड़ा हुआ है, वो बोलेगा यार ठीक है, आपको नजर आएगा कि यार फाइलो जन्नत में जा रहा है, तो आप पूछोगे अल्लाह से कि यार ये अल्लाह ये तो एथियस्ट आप कैसे भेज रहे हो, बोलेगा मैंने कहा था जिसको मेरी मर्जी है, जिसकी मेरी विल होगी मैं भेजूंगा, तो वो ठीक है, वो बोल रहा है कि ठीक है, तो जिसको इसका मतलब है कि हम ऐसा भी हो सकता है कि सारे मुसलमान जन्नत जहन्नुम में, सारे एथियस्ट जन्नत में, ठीक है भाई, अल्लाह की मर्जी है. Yeah, he could do that, but बस तो बस सही है, then that will be That he could do anything he want, but बस सही है. right. How would you know what would he do basically? बस मेरे You don't have any हाँ way हमें to तो पता ही know. नहीं है, आपको बस ठीक है, मेरा ख्याल है कोई तरीका फाइलो ही नहीं काफी, मालूम है इसका कि क्यों, आई थिंक इसी पे एंड करते हैं. उसने वो उन आयतों में वो एग्जाम्पल भी दे दिया है, राइट, वो जो आयतें हैं उसमें बता दिया है कि मैं अगर चाहूंगा तो और नहीं चाहूंगा तो नहीं, राइट. बिल्कुल. So और यहाँ ये तो एक नहीं, ये intentions बहुत clear सारे हो गए, राइट. ये एक यानी आपने तो ये the verse that you're referring to about whether people will be in hell or heaven for eternal for an eternity, it depends on Allah's will. This is only one verse in the Quran. It has been mentioned multiple times in other verses that Allah will send in heaven whoever he wills, and will send to hell whoever he wills. This is not once, this is multiple times. So I think he has left a lot more choice for himself in that regard, that who will he throw people, who will he throw in hell and who will he will throw in heaven particularly. Right. तो ये तो है. मैं यहाँ पे मकर को क्यों ला रहा था मैं यहाँ पे कि ये हो सकता है कि इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रैंड प्लान, राइट, कि मैंने ये आयतें तो भेजी हैं, इसमें मैंने ये दे दिया कि इनको जन्नत में डालूंगा, इनको जन्नत, पर मेरा प्लान बिल्कुल उल्टा है इससे, एंड आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ द प्लानर्स बेसिकली, राइट. He can have a very good reason to lie to us in Quran. He could be lying. Yeah, why could God would lie? Why would he? He can have some. Why couldn't he? He knows better, right? I think बहुत लंबी बात हो गई. Let's keep it till here. Yeah. Mahdin wanted to say something. Mahdin, jump in. No. I was just listening to the somewhat mess that Saeed has created and thinking, bloody hell. Saeed भाई एक गुजारिश है ना, एक गुजारिश है, आप आते हो वो अच्छा लगता है, बट आप कई बार जाके इन चीजों के इन बातों पर आप सोचते हो, यानी सबसे पहला सवाल. अरे भाई, I was in a atheist forum for 10 years. Okay, so how can I do not think about it? You're saying you were an atheist for 10 years? Yeah, I was in an atheist forum. No, he was in a forum. He was. Yes. Oh, you were dealing with all of right. So that doesn't mean that you. Right, but that doesn't mean you got the good arguments there, right? No, but I was a member of the atheist forum. Yeah. Does that mean you always got the very best arguments to counter your arguments? And you thought over all these arguments? Because it doesn't seem like you thought these arguments before, right? No, I think he thinks about all of these things in silos. I mean, you have to have a consistent worldview, Saeed. I mean, there are so many problems within your worldview. I mean, try to fix them at least. I mean, at least be cognizant. Saeed, what I would encourage, the atheist forum includes a host of different types of people with different abilities, different qualifications, different backgrounds, lay people, lay persons, non-experts, people who are not fluent necessarily in academically. There is also something called philosophy, academic philosophy.
right? Philosophy is about critical thinking, thinking deeply about reality and the world, existence, why things occur, and so on. And you can actually buy textbooks, and you can actually go and read research papers, not research papers, but journal articles by actual academics. So you can actually buy certain books on atheism. You can buy certain books on religious debates, etc. That's better for you to understand these things, because on an atheist forum, it's complete. It's full of people who may not give you the best, like you said, like Philo said, the best arguments. And furthermore, it doesn't show necessarily that you, Saeed, yourself, have a good breadth of knowledge from every area of philosophy to analyze these things effectively. So, for example, like you're saying, you've been on an atheist forum. I've been through, university. I've also been exposed to actual academic philosophy, and this is why I lean towards these conclusions. But I've actually read much more competent arguments, and I've looked at theistic arguments as well by famous theists, which are a lot better than Muslim philosophers at this moment. Christian philosophers, they make normal arguments for the existence of God, like contingency argument, fine-tuning argument. And what I'm saying is that you will need to first see this entirely and learn the skills to analyze these things, like learn logic, learn critical thinking, see what a contradiction is, and all this stuff, in order to appreciate why maybe like arguments by theists are weaker than arguments by atheists. That's what I think. But a forum is not going to give you that. Yeah. Yeah, I'm very open-minded for everything. I want to look for suspicious. I even look at Islam is a made-up religion, Prophet Muhammad. I look in that way too. It's not I'm believer. I'm the Muslim who is very few people believe what I believe about Islam. So I'm very open-minded, very broad-minded. To look, I put a Christian, a Hindu, Muslim, whoever believe in God, and they go to heaven. No, you are open-minded. That's perfectly fine, Said bhai. We are not saying that. But have you analyzed? Have you really thought through these other arguments comprehensively, and have you understood those? That's what Mahdin is asking you to do. Yeah, you're open-minded. You take everybody together. But that doesn't mean you have understood these arguments properly, right? No, I look into Prophet Muhammad. Maybe he's made up the religion. I look that way too. No, but you just don't have to think it that way. You have to come up with arguments, solid reasonings to come to that conclusion. Have you done that basically? Have you looked into all these things that Mahdin is talking about, the philosophy of religion, the history of religion, then the other things that go with religious claims basically? Are there archaeological and historical evidences supporting their claims, or there isn't sufficient evidence to support those claims? And are there evidences contrary to those, saying that religions might be man-made? That's been happening around for a couple of millennia, and so you have to weigh in all those things, right? I mean, it's a lot to ponder over, lot to think over. Nobody becomes an atheist just by on a blink of an eye, pretty much, right? Yeah, Saeed, if I can, tens of years of understanding of reading literature, understanding, and then they think through, and then Saeed, for example, if I could advise you for something, then if you're trying to say that you've done the research and you've done the examination of atheism versus Islam or atheism versus theism, then I would expect you to have perhaps engaged with atheistic philosophers, because this is the realm of philosophy, really. Critical thinking philosophy, people who think about these things, Eastern philosophy as well, Western philosophy. But you would have known at least about certain atheist philosophers. Like, I can give you a name. For example, a very good one, his name is Paul Draper. Another example is somebody called Graham Oppy. And they've written extensively about every single argument for the existence of God, for and against. And he's analyzed it, balanced it, and he gives reasons why God might exist, reasons why God may not exist. And they've done like a comprehensive
examination of all the most of the arguments, I would say, not all arguments, but most of the arguments that apply across all religions. And some of them have concluded that, you know, atheism is more accurate, or what they call naturalism is more accurate realm to understand the world. Now, when you say that you've done your research, I would expect you to have known about this, right? But I am assuming you've never heard of Graham Oppy or Paul Draper. No, I do not. Yeah. So these guys are like, imagine like Ibn Sina, you know, like people who are prominent scholars of Islam. There are prominent, quote unquote, scholars of atheistic philosophy. Yes, but if you don't know them or imagine if we did not know anything about Islam. We didn't know about the scholars. We didn't know about the hadiths. Right? There's an entire, you know, school of people doing this stuff. So this shows to me, by your own admission, that a forum is not enough. You need to go and look at the actual literature. And I can send you a paper. I can give you a paper by Paul Draper, examining examining the arguments for God, arguments against God, and he explains why it's more likely that atheism is true. You would, if you did the research, you would know about that. And look, I'm not saying that in a scolding fashion. I get it. Not everybody can do that. But and I get it that it's not always possible. Maybe you innocently weren't aware this even existed. All I'm saying is, now you do know. Now you should go and look into that. And it might require you to just sit down and think about it a bit longer. Yeah? Yes, yeah. I think we should end the stream. Philo? Yeah, I think Said bhai, Yes. good to have you here. And I Yeah, think I wanted to talk about suffering, human suffering. Women? No, we were discussing about animals, right? You don't equate them, right? The You think there's a difference? A problem of evil. No, say you think there's a difference between women and animals, right? Saeed, what if before you do anything, sorry, Saeed, what if because you're such an ardent member who comes onto our streams, let's up the game a little bit. What if you keep in, you know, if you give us our email, I'll send you some arguments, written arguments for the problem of evil, like an article. I wrote an article about problem of evil. I wanted to discuss about this with you. But you wrote an article. Please share that article with us. I myself wrote a problem of evil. Saeed, when people write an article, though, academically, you have to engage with the arguments, the proponents of the counter argument. So if I write an argument from the problem, I will have to engage with the best argument, best spokespeople, the best proficient thinkers who have argued for the problem of evil, using the problem of evil to demonstrate that God could not exist, let's say. But if you wrote an article, I would expect you to engage with those points, right? And that's the thing. So that's why that's very important point. That's why I wrote this. It's not a problem, but it is good for the evil we have in this world. Human benefit from this evil. No. But, See, women. We will talk later. Human. Okay, sorry, guys. Wait. Before anybody continue, who cares? He's going into the content of the problem of evil. I'm not talking about the content of the problem of evil right now. Aside your argument, all I am saying, you're trying right now to disprove the problem of evil. We're not talking about that. No, it's not a problem. No, Saeed. Listen to Mahdin. Saeed, listen to Mahdin first. What I was trying to say to you, why don't because you've been an ardent member of our stream, why don't we set you some homework? Okay, you've already written an article. What I'm going to do, I'm going to share articles for a strong version of the problem of evil by certain people like Stephen Law, Paul Draper, etc. Jail Schellenberg. Your article, I would imagine, if you don't know these people, then it has not engaged with those specific arguments. So what I can do then is send you these articles
and you Yeah, could give either me link. write, huh? Give me the link. I will. You can either write a response to each of the points, or you can talk about it with us, or both. It's up to you. The reason I'm saying this is this way you can learn about the arguments. The reason I'm saying that again is if you're saying that you've not heard a good argument, and a good argument for atheism, let's say, or because you don't know these people, that means you've not engaged with the best versions of the problem of evil. You're talking. See the point that you made there, Saeed, that is good for us. We know this. Yeah. We've heard this argument before, right? But that's not the only point about the problem of evil. People have responded to the idea that it's good for us in a deep detail. What I'm going to do is show you some of those articles, and then you can think about that. You know, a Greek philosopher, his name is Epicurus. Epicurus. He wrote his I will quote him. Is No, God willing we've to all provide? heard it. You know what? Saeed, we can go into the content of it. We are not going into the details of it Yeah. right now. Yeah, We're I just think discussing a strategy. I just quote him. I will quote him. No, Said bhai, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? I think we are well past our time. Sorry, and I don't want to dismiss you like this, but we all heard Epicurean arguments and those things, right? What I want to do is I want you to read what Mahdin is gonna send you, right? We can discuss Epicurus, we can discuss Socrates, Plato, and all those things later on, right? Euthyphro's dialogues and Plato's dialogues, we can all talk about those later, right? Yeah, I will read. If you send me a link, I will read. Sure. Khayalie, sorry, you were saying something. Sorry. No, I will read Matthew if you send me. So please share your email address with us. Yeah, the email address यहाँ पर आप डाल दो comment में, in private chat में डाल दो, so that we can share that link. Mahdin can share the articles with you, and then probably you can have a look at them, provide your own article, and make sure that the article actually covers the counters that are being presented to the to your arguments, to make sure that you have a look at them as well. Okay? If nothing happens, hopefully, Saeed, you will become more knowledgeable about these arguments, more familiar with how to give a proper good counter argument, and how to write a response. Yeah, I will do that. Okay. Thank you, Saeed. All right. So write your in the private chat. You can write your email address. Okay, if you are okay with that, right? Could you send me a link right now here? No, we'll have to look at it. We can't do that. We'll send you like 2 or 3 articles. Right now, I can't send you like all the links. But if you, just share your email, and then I can send you the articles. And because right now I can't send you like 3-4 links. It'll take a bit of while to find the ones that I want to send you. Okay. Okay, Saeed. Thank you for coming. I think you can be in the backstage. Just add the all right, no problem, in the sir. chat. All right. We'll send it. Okay, thank you, sir, for appreciating me. That's good. That's all good. All right. Philo, you there? Yes, I'm here. Yeah, I put Saeed on backstage. Saeed, if you want, you can write your email because we can't post the links. All right. Okay. All right. Cool. Awesome. It's a Saeed, funny email. Thank you very much. But yeah, we're not going to mention it. Okay. Email. All right. Okay. Okay. All right. Do you want to end? So yeah, let's just end it now. We should end the stream, right? I think. All right. Any last points to add, both of you? And none from my side. It was a good stream. I enjoyed the topic, and I think we covered Yeah, it from quite a few angles. Right. Mahdin. No, it's all right. Maybe I could have said something about the science of suffering, but I think we've exceeded our limit now. I think maybe for another time we'll talk about that. You want to add it? Probably take 5 minutes or so, 5-10 minutes, or it's gonna go further. No, I think because fine. we have lost that that chain of thought, basically. Exactly. Right. Yeah.
All right. Anyways, so before we leave, there are a few people still listening, a couple of people still listening. So what I'm gonna ask and request you to do is, first thing first, like the stream, and this has to be a genuine like. I hope that you really like, because if you're still here listening to us, then you probably like it. So once this stream is over, you make sure that you comment as well, and share the stream as well, share our channel as much as you can, and click on that notification bell, so that you get the notification whenever there is a stream. And we are planning to have more frequent, I hope we will do more frequent streams, so that we have more content over there, and then probably try to be more regular about it as well. So far we haven't been so regular. So yeah, that's a request, sincere request once again, to like, subscribe, and share. And thank you to my co-hosts Mahdin and Khayalie. Khayalie, it was a really good stream. It was a short content, but there was so much to unpack there, right? So बहुत कुछ था unpack करने के लिए. I think मैं हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी के भूल भुलैया में घूम गया हूँ. So anyway, yeah, अच्छी stream थी, काफी अच्छी stream थी. Good to have Mahdin here as well. All right. All right. Take care, guys. Bye-bye. Bye-bye.